गुजरात विधानसभा निर्वाचन एवं जो मतदान रे आज गुरुत्वपूर्ण रहुची 98टी आसन जोठी मतदान चली एवं जो 98टी आसन रे देखिबा जदी बीजेपी रो पल्ला भारी थिला एवं बदली जाउची एथर समीकरण एथि कारण गोटे पटे बीजेपी कांग्रेस भितरे लड़ाई हेउतिला किंतु एथर एंट्री करिछि आप ता माने कहि परिबा त्रिमुखी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस एवं आप मध्य रे हेउची एवं एथर प्रश्न आसुची गड़ बजाय रखी पारिबो कि बीजेपी कारण बीजेपी रो पल्ला सेठारे भारी थिला ना जो आप एंट्री करिछि आप समस्त को चकमा देबो ना ट्रक को पुणी थरे फेरिबो कांग्रेस कारण ए जदी देखिबा यार प्रचार देखिबा जो विधानसभा निर्वाचन चली एवं जो निर्वाचन आज सकाळ आरंभ होईछि मतदान चली जो भली भाबरे प्रचार होईछि जो चेंजेस आसीबा कथा संभावना कह जाउछि जो फैक्टर सब रहउछि इशू फैक्टर होछि जो समस्या रहउछि स्थानीय लोक मानकर से समस्या को भित्ति करी वोटर मतदान करिवे ना जो चिराचरित ढंग रे मतदान प्रक्रिया चली थाए से सब वर्तमान चली सेठारे तमाम चित्र को नहीं हमें आज आलोचना करूछे तेणु जो 98टी आसन कथा कहूचे जो 88टी आसन रे प्रार्थी देछि आम आदमी पार्टी एवं बीजेपी कांग्रेस समस्त 98टी आसन रे लड़ुछंती त्रिमुखी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस एवं आप एथर जोड़ी होईछि जेतु त्रिमुखी लड़ाई चली एवं प्रथम पर्याय रे जो 98टी आसन रे मतदान चली सेठी बीजेपी कांग्रेस समस्त 98टी आसन रे मतदान करिसंती आसन रे लड़ुचंती 88टी आसन रे आम आदमी पार्टी एथर प्रार्थी देछि एवं मैदान रे 339 जन स्वाधीन प्रार्थी अछंती 788 प्रार्थी भितर 70 जन महिला प्रार्थी अछंती अधिक आलोचना करने आम सहित न्यूज रूम जोड़ी होती मोर सहयोगी विक्रम केशरी परिजा और सेपटे वरिष्ठ सांबादिक रवि दास आम सहित अच्छा आपण मानक स्वागत करुच्छे आज आलोचना को प्रथम श्रीजुक्त दास आपण को पचारि बर्तमान जो गुजरात निर्वाचन आम आलोचना करुचे आपण को कौन लगुच एथर किभली फाइट चली देखु गुजरात एकमात्र कथा बीजेपी दल 27 वर्ष है क्षमता अच्छी गोटे दल क्रमागत भाव 27 वर्ष क्षमता बोधे पश्चिम बंग परी हूँ द्वितीय क्रमागत भाव 27 वर्ष क्षमता रेकर्ड करी एथर मैंडेट पाइबे सपक्ष बार मन समान अच्छी कहीं 2002 जो होता गुजरात दंगा पर ठारू नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री थे जो प्रकार स्थिति से बीजेपी क्रमागत भाव में जनसमर्थन आसूची किंतु गत निर्वाचन आम 2017 देखिए आप प्रथम थर बीजेपी गोटे आसीगला टे धक्का पाइला 99 को आसन चली आसला कांग्रेस संख्या टे बढ़ीगला किंतु एथर आउ गोटे पर्याय होउची निर्वाचन रे कांग्रेस यदि गत निर्वाचन लड़ुला एथर से बाजार लड़ी बोली भावुना जो कांग्रेस सबुठी प्रार्थी देती किंतु कांग्रेस जो मान को कांग्रेस मुख्य बोली लोक मैंने जानी जोटा गांधी परिवार कहुची से राहुल गांधी हूँ सोनिया गांधी हूँ प्रियंका गांधी हूँ राहुल गांधी केवल 2टा सभा करसी ना अपर पक्ष एथर तो तृतीय पक्ष अच्छे प्रथम थर गुजरात रे तृतीय दल बाहर आसी आम आदमी पार्टी एवं आम आदमी पार्टी जोरसोर निर्वाचन प्रचार कर एंटी इनकम्बांस फायदा नापी एवं निर्दिष्ट भाव में प्रतिश्रुति दे इलेक्ट्रिसिटी हो पानी हो शिक्षा स्वास्थ्य कथा कहीकि सी आसी तो से जदि ये बीजेपी एडभांटेज होची नेता नरेंद्र मोदी जे देश प्रधानमंत्री अच्छा से गुजरात लोक यदि देश स्वराष्ट्र मंत्री अच्छे से गुजरात लोक तेणु एमान प्रति पूरा स्वतंत्र भाव में गुजरात रे गोटे अस्मितार कथा अच्छी सेटा नौचन जोटि प्रधानमंत्री मन देखी निर्वाचन प्रचार मानक प्रार्थी किए चिंता करनी तबे कमल भोट दियो सी मो पाक आसो तार सी सीधा सड़क लोक गुजरात लोक ये जो भोट तुम दौच सी नरेंद्र मोदी की भोट दियो एवं यही कथा ये नाचुराली नरेंद्र मोदी कथा आसी निश्चय गुजरातवासी निश्चित अस्मितार नरेंद्र मोदी जेतु देश प्रधानमंत्री विश्वर जड़े बड़ नेता तेणु से हिसाब से अस्मिता फिल्म जो विधानसभा निर्वाचन हेले से अस्मिता कथा रोता दृष्टि आंटी इनकम्बांसी सी बहुत बड़े प्रतिहत कर दौर जो आंटी इनकम्बांसी 27 वर्ष शासन होता आंटी इनकम्बांसी डेभलप कर सत्वे आम आदमी पार्टी जो प्रचार कर
श्रीजुक्त दास आपण टिके आम सहित थांतु आम अधिक आलोचना भी जारी रखा भितर विक्रम जोड़ी होती विक्रम जदि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कथा कहूचे एवं सौराष्ट्र कच्छ जदि कहूचे जो बर्तमान मतदान चली 89 आसन रे 54 आसन गुरुत्वपूर्ण जदि आम तार चित्र देखुचे किभली स्थिति सेठारे रही जो प्रचार इंपैक्ट केते दूर पड़िबो ता उपरे देखंतु इंपैक्ट जहाँ रही जो प्रचार रही है प्रचार प्रभाव बहुत पड़ो जहाँ कहते श्रीजुक्त दास ये लड़ई बीजेपी आप आ कांग्रेस भितर नुहे ये लड़ई होची सीधा सड़क मोदी केजरीवाल और राहुल गांधी भितर तेणुक जो कथा श्रीजुक्त दास कहले जे लड़ई ये हूँ आंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कि जोटा रोची कि भाव में प्रतिहत करेंगे से सब कथा नुहे जहाँ आप स्ट्राटेजी देखिए कांग्रेस स्ट्राटेजी देखिए से सीधा सड़क फ्रीबीज उपर ध्यान दौरान एवं सीधा सड़क गैस दर कमाइबा सीधा सड़क कृषि ऋण छाड़ करवा ये सब कथा को आज ट्वीट करके जनई अपर पक्षे बीजेपी कथा जदि आम कह बीजेपी कहूँ आम जहाँ विकास कार्य करूँ से विकास कार्य आधार आमको भोट दिंतु तेणु गोटे कथा ये स्पष्ट जे एठी लड़ई होची गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल आप देखा चाहूँगी जे दिल्ली रे एई भली काम होईची शिक्षा क्षेत्र में उन्नति होईची स्वास्थ्य क्षेत्र में ए उन्नति कराई एवं एई पदक्षेप निया जाईची जहाँ पर दिल्ली रो मॉडल रो सक्सेस रूपायन हला पंजाब रे होईची किंतु सेही कथा समान आउथर सुजोग दिया जाऊ गुजरात रे किंतु दिल्ली बीजेपी कहूची जे गुजरात रे आमे गत 25 वर्ष धरी 27 वर्ष धरी आमे जहाँ करि आसछु ताहा आपण मानको आखि आगर अछि एवं एई निर्वाचन रो पूर्व कथा जदि आम कह गत 3 मास धरिक 4 मास धरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट कलिग माने बारंबार लगातार प्रति सप्ताह 2-3 जन गुजरात गस्त केवल गस्त करना गुजरात अनेक प्रकार योजना को घोषणा कर सबूर प्रभाव निश्चय लोक मान पड़ो तेज यह केते परिमाण में भोट रे काहाकू कन्वर्ट करिवो ताहा आजिर भोट बा आसंता जो 5 तारिख भोट हम ही जना पड़ो निश्चित भाव में विक्रम आम से दिगरे आलोचना आगक बढ़ेबा किंतु गुजरात रु जोड़ी होती आमर प्रतिनिधि रचना उपाध्याय सहित अधिक आलोचना करवा रचना अभी तक जो जानकारी आया है कितना प्रतिशत मतदान हुआ है क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस बार देखिए 12 बज रहे हैं और गुजरात में पहले चरण का मतदान आज होना है और मतदान आज होना है और इस वक्त मैं तलाला के एक स्कूल के बाहर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आप देखें तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको न्यूज 18 के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर वोटिंग चल रही है और लोग अपने घर से वोट जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि अपने मतदान के लिए अपने घरों से बाहर जाए मतदान का प्रयोग करें क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार बनाने के पीछे या देश की सरकार बनाने के पीछे जनता का सबसे बड़ा हाथ होता है जनता यानी कि ये एक तरीके से लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव में जिस तरीके से जो वोट होता है वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है और एक वोट से ही एक प्रत्याशी की किस्मत तय की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ पहले ये जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में थी और कांग्रेस के ही भगवान बराड़ जो है वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं वो इस बार बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर प्रबल दावेदारी कर रही है बीजेपी भी अपनी जीत की दावेदारी कर रही है। 8 तारीख को इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और आज जनता अपने मत के माध्यम से ये तय करेगी कि आने वाले समय में कौन से प्रत्याशी होंगे किसको वो चुनकर अपने प्रदेश में लेकर आएंगे अपने क्षेत्र में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लोग घरों से पहुंच रहे हैं महिलाओं की भी उतनी ही संख्या यहाँ देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस वाले केंद्र पर अगर आप देखें तो जी एक चीज आपसे जानना चाहूंगा देखिए वोट परसेंटेज जो है वो बड़े मायने रखते हैं इस टाइप के इलेक्शंस में जहां पर ट्रायंगुलर फाइट होता है तो यहां पर अभी जो आप देख रहे हैं अभी लोगों को कितना ताता है कितने लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं वो परसेंटेज कितना तक बढ़ सकता है पिछले के मुकाबले में। अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अगर मैं सिर्फ इसी क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर 20 से 25% वोट जो है वो पड़ चुका है क्योंकि अभी 12 बजे हैं और वोट शाम तक पड़ेगा 5-5:30 बजे का जो समय रहता है। तो लोग कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह वोट के लिए पहुंचते हैं और कई बार ऐसे होता है कि अपना सारा काम खत्म करने के बाद खासकर जो महिलाएं हैं वो अपने घर का काम खत्म करने के बाद पहुंचती हैं।
लेकिन हमने कई जगहों पर ऐसा देखा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी संख्या में देखने के लिए मिला। प्रतिशत जो था वो लोगों का वहां पर ज्यादा पहुंच रहे थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 20 से 25% इस अगर हम क्षेत्र की बात करें, इस पोलिंग बूथ की बात करें तो यहाँ पर इतना ही देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, वोटर्स की संख्या यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। हालांकि यहाँ पर भी अभी काफी सारे वोटर्स हैं और आप देख भी सकते हैं कि चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग हो, वो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, क्योंकि अपनी एक ड्यूटी होती है वोट देना, उसको करने के लिए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। और आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है बकायदा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो वोट है वो डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं भगवान भाई बराड़ वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनका कहना है कि इस बार गुजरात में जो लोग वोट देकर निकल रहे हैं उनसे कुछ उनका कुछ रिएक्शन हमको मिल सकता है क्या? जो लोग वोट देकर निकल रहे हैं या फिर जो लोग खड़े हुए हैं लाइन में, उनका कुछ रिएक्शन हमको मिल सकता है क्या? देखिए, जो लोग खड़े हुए हैं वहां अंदर जाना मीडिया के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तो हम बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप बताइए, आप डाल के आई हैं वोट? हाँ। और क्या लग रहा है आपको कि किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा सरकार बनेगी। अच्छा, आपको ऐसा, आप यंग वोटर है, क्या सोच के, क्या मन में था कि मैं इस पार्टी को दूंगी या इसको दूंगी? क्या मतलब क्या चाहती हैं आप, क्या मांगे आपकी? आपको जैसे लगे वैसे हम करें। मतलब आप उसको भी जिताना चाहती हैं जो विकास करे? हाँ, विकास जे करे इन्हें जिताएंगे। अच्छा लग रहा है आपको वोट करके आई आप? हाँ, अच्छा लग रहा है। आसानी से लोग जा पा रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पर यंग वोटर हैं जिनका कहना है कि वो सिर्फ ऐसे प्रत्याशी को वोट करना चाहते हैं जो उनके क्षेत्र का, उनके प्रदेश का विकास करे। आप बताएं भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? बीजेपी आएगी, विकास को मत दिया है हम। बिल्कुल, आप कह रहे बीजेपी आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि वो बहुत अच्छा कर रही है। गुजरात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी कर रही है। यहाँ हम बीजेपी को ही चाहते हैं, आम आदमी को कुछ है ही नहीं। क्योंकि मफत की चीज लेना हम गुजरातियों का नो अलाउड है, हम मफत कुछ लेते ही नहीं। तो हम विकास को जानते हैं। आपने सुना कि यहाँ पर विकास के नाम पर वोट जा रहा है और सीधे सिरे से ये कह रहे हैं कि मुफ्त की चीजें रचना लेना चाहते हैं। जानना चाहूंगी आपसे, ये जो विकास की बात कर रहे हैं सब लोग या फिर जो लोग मत दे के वोटर्स जो लौट रहे हैं उन लोगों का क्या कहना है कि ठीक है जो भी सरकार आए? मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार जो तमाम प्रचार आपने देखा, जिस हिसाब से तीनों दल, हम आपकी बात करें, कांग्रेस या फिर बीजेपी की बात करें, जो मुद्दा है, जो लोकल एरिया की मुद्दा है, वो कितना मायने रखता है इस बार चेंजेस लाने के लिए? देखिए, अगर हम लोकल मुद्दों की बात करें और इस बार चेंज की बात करें तो जहां मैं खड़ी हुई हूं ये कांग्रेस की सीट हुआ करती थी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि अब बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो ये सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ा गया है वो लोकल मुद्दों पर लड़ा गया है, क्योंकि जो लोगों की, यहाँ पे स्थानीय लोगों की जो जरूरतें हैं, स्थानीय लोगों की जो मांगे हैं, उनको पूरा करने का वादा कहीं ना कहीं से तमाम जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से किया गया है। और आम आदमी पार्टी की तरफ की बात करें तो आम आदमी पार्टी हमेशा से ही ये कहती रही है कि हम जिस तरीके से हमने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया है वही हम दिल्ली मॉडल जो है उसके साथ गुजरात में हम मॉडल दिखाना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज यहाँ दिखाना चाहूंगी, जहां पर हम खड़े हैं ये आदर्श गांव है और आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से ही देख सकते हैं कि किस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। तो लोग ये जाहिर सी बात चाहते हैं कि जहां विकास हो, जहां डेवलपमेंट हो, ऐसी ही सरकार को वो लेकर आए और इसी के लिए वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक आदर्श गांव का नजारा है जहां पर पूरी तरीके से लोगों को, जो लोकल लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको किस तरीके की सुविधाएं हो वो उनको ध्यान में रखते हुए इसका डेवलपमेंट किया गया है। तो अब जो लोग हैं वो ऐसे और भी जगहों का डेवलपमेंट चाहते हैं और इसी के लिए वो अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और महिलाओं की भी संख्या यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि किसी भी सरकार को बनाने के लिए, किसी को भी जिताने के लिए आधी आबादी का महत्वपूर्ण योगदान होता है और वही योगदान निभाने के लिए महिलाएं भी अपने घरों से बाहर निकल रही हैं।
पुरुष भी घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि अभी प्रतिशत थोड़ा सा स्लो जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे वोटर्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी और यंग वोटर्स भी घरों से बाहर आएंगे। हम बाद में भी आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे और लोगों की रिएक्शन आगे जाके भी आपसे लेंगे। अभी मैं आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी। सीधासळख आसंतु जीवा गुजरात निर्वाचन फलाफल रोमांचित हेबा परि मने हेउछि, किंतु बीजेपी व्यतीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस निर्वाचन प्रचार संपूर्ण शक्ति लगाइछंती। आज प्रथम पर्याय वोटिंग चलीछि एवं फलाफल को नहीं अरविंद केजरीवाल गोटिए परे गोटिए भविष्यवाणी करिसेंती। आमे जे देखिबा पूर्वरु पंजाब कथा कोंतु दिल्ली कथा कोंतु जे भली भाबरे केजरीवाल भविष्यवाणी करिथिले गोटिए परे गोटिए भविष्यवाणी सत होईछि। एठी मध्ये गुजरात रे आम आदमी पार्टी सरकार करिवो बोली से भविष्यवाणी करिसेंती आ तांकर तीन प्रार्थी विपुल भोट रे जीतिबे बोली से भविष्यवाणी करिसेंती। आसंतु सुनिबा से कोन कहउछंती। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। आलोचना करबा आम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक रवि दास मध्य। श्रीजुक्त दास आमे गुजरात चित्र देखौतले जेउठी सब चालीछि मतदान एवं जदियो बर्तन 20 रु 25% मतदान हेछि, किंतु अनेक स्थान रे भलो मतदान भी होछि। किंतु आपण देखंतु अरविंद केजरीवाल जो भविष्यवाणी करिसंती तांको भविष्यवाणी जो देखिबा पंजाब कथा कोंतु दिल्ली कथा कोंतु सत हेछि, तो लागुछि कि तांकर ए गुजरात को नै भविष्यवाणी सत हे पारे ना गुजरात वासी जहा चिंता करिसंती ताको आधार करी आमे देखिबा स्थिति। सब बेले तांको भविष्यवाणी को सत हेछि, भविष्यवाणी गुआर सत है ना उत्तराखंड सत हो गला ता नुहे। ठीक है पंजाब में कही केतला बड़ मास्टर से कहबार नहीं, किंतु देखो सी आप प्रतिनिधि जहाँ कहते से ही गुरुत्वपूर्ण। आप प्रतिनिधि से कहते जो लोक मैंने भोट दान क्षेत्र को आसुच्च भोट दौरान से स्थानीय मुद्दाटा गुरुत्वपूर्ण। लोकल इश्यू आप देखते आप प्रतिनिधि स्पष्ट भाव कहते मुझे कहली एंटी इनकम कथा हूँ लोकल मुद्दा इतने आसूची जी भल प्रार्थी जदियो बीजेपी जो दौरान निश्चित भाव में प्रधानमंत्री मोदी को आखि आगे देखुं, अमित शाह को देखुं, जी भी होना कैंडिडेट, किंतु किसी लोक जे मुद्दा देवे से किसी ना किसी तो निज प्रार्थी को देखिए ना। आम आदमी पार्टी चांसेस आसीबो। श्रीजुक्त दास मु गोटे कथा केवल कहबा पई चाहूची, आमे जदि 2017 रो जो गणित अछि से गणित को नजर पकेइबा, ये 89 आसन भितरु बीजेपी जितिथिला 48 टी आसन आ कांग्रेस जितिला 40 टी आसन आ गोटे आसन स्वाधीन प्रार्थी जितिथिले। अर्थात एटी कांग्रेस भलो फाइट देथिला बीजेपी को एवं केवल सेतिक नुहे जो सौराष्ट्र और कच्छ अंचल जो 54 आसन होछि से भितरु 23 टी रे जितिथिला बीजेपी आ कांग्रेस को मिलथिला 30 आसन। अर्थात कांग्रेस आगे रहिथिला ये जो सौराष्ट्र और कच्छ अंचल जो कि आज इलेक्शन होची, आज जो भोट पड़ुची, किंतु एथर जदि आमे देखिबा गत थर कांग्रेस रो कैंपेनिंग स्टाइल जो देखिबा आमे बहुत एग्रेसिव थिला एवं कांग्रेस तार फलाफल भी पाइथिला। एथर किंतु कांग्रेस रो जो कैंपेनिंग स्टाइल शैली आमे देखिले किंतु कांग्रेस सेतिक एग्रेसिव नाही। तेनु ए जो परसेंटेज ऑफ वोट ये कांग्रेस रो शिफ्ट होबो आपको ना बीजेपी रो शिफ्ट होबो आपको। जदि कांग्रेस रो शिफ्ट हुए आपको ताहले हुए तो बीजेपी रक्षा पाई जाई पारे, किंतु जदि बीजेपी रो वोट शिफ्ट होउछ कि आपको ताल तो गण तो पूरा एपट सेपट होइबा। आपन कोन भाबुछंती? ये मु तो भाबुची एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट रे निश्चित भाव में एडवांटेज टू बीजेपी नो डाउट, किंतु आम आदमी पार्टी जे केवल कांग्रेस रो वोट काटिबो ए कथा नुहे। मु जा शंकर सिंह वागेला जा कहछन मु तांका सहित एकमत जे ये दुई पट काटुची। ये जो वोट पाइबो एई पार से कांग्रेस वोट बेसी पाई पारे, बीजेपी वोट मत नबो। कारण से जो कहले करत भलिया ये आगु जीव पछु काटे उभय करू काटिबो। जो शंकर सिंह वागेला जो
उपाख्यान दे कहते मु मन ताको पूर्ण समर्थन करू। शंकर सिंह बाघेला होचंती प्रधानमंत्री मोदी एकदम घनिष्ठ सहयोगी। अतीत में 2 जन ग्रासरूट लेवल काम करके गोटे दल में उठी परवर्ती समय ये कांग्रेस को जाइछंती तेणु से भल भाव हुए रणनीति जानी थी पारती तेबे याकू बीजेपी ग्रहण करिछि तो एटा बीजेपी पई संकेत नथला तो तांकर नहीं उभय से कहले उभय मैं कहूँ उभयर भोट से काटिबो केना आम आदमी पार्टी आसो आपण से आम आज से देखीचे गुजरात रे पोलाराइज भोट दी पार्टी पूरा तृतीय पार्टी आसुची माने क्या भोट नब कौन भोट नब जो विरोधी थे भोट नब बेसी कि सपक्ष भोट मत नब जो मैंने कहली आंटी इनकमेंस लोकाल इश्यू नहीं ये जो प्रमिश से करुँगा इलेक्ट्रिसिटी देदेवे अमुक करदे स्कूल सुविधा देदेवे यही जो कथा से कहते लोकाल इश्यू रे मतलब किसी लोक गोटे कथा मो मन को आसुची जे जदि माने एंटी इनकमेंसी फैक्टर रही ताले फ्रीबीज रो माने जो भंडार कहीं के माने प्रतिश्रुति बारंबार दोचंती आज जो राहुल गांधी जहां भी ट्वीट करचंती से ट्वीट रही जे गैस रो दर को मने पकाई आपण माने वोट दियंतु सेमती आम आदमी पार्टी मध्य से फ्रीबीज इलेक्ट्रिसिटी कथा कहिची तो माने फ्रीबीज ऊपर कहीं की माने बेसी जोर दोचंती आ उपाय नहीं ना माने जेहेतु बेकारी आ दर वृद्धि ये तो मुख्य मुद्दा बाहर से नौकरी ना और दर वृद्धि गोटे नतीजा गोटे कथा आज जो भोट होची सेठी बहुत बड़ बड़ प्रार्थी जो मैंने अच्छा भीतर रही आप मुख्यमंत्री फेस ईशुदान गाढ़वी खंबालिया लड़ुंट आप राज्य सभापति गोपाल इटालिया रोचंती सी लड़ुंट बीजेपी जदि आम बड़ प्रार्थी कहवा जामनगर नॉर्थ रु लड़ुंट रिभावा जाडेजा तो ये जो आप 2 जन जाक प्रमुख चेहरा से इलेक्शन प्रथम रही जाऊँगी जदि एटा की प्रकार संदेश दौची अर्थात गोटे प्रकार तांकर भोटिंग शैली को देखी बीजेपी कौन परवर्ती रणनीति करिवो की एक्जाक्टली इथे आज कौन होची जहाँ कहले गला थर बीजेपी के जो धक्का होता आप देखिए कांग्रेस 77 आसन को चली गला धक्का यही अंचल रही आप कहले स्वराष्ट्र पछु तेणु यहीटा पर बीजेपी तार जानी पड़ो आज भोट पर जानी कौड़ को जाऊँ अच्छी ना आज्ञा हाथ तो मात्र 2 दिन थी तो 2 दिन में बहुत किसी एपट सेपट हो भावुं कि निश्चित भाव आज तो निजे मोदी जिते देखो रोड शो कर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड शो इन अहमदाबाद 50 किलोमीटर आपन कौन कहते आज जो भोटिंग पैटर्न रही जहां आम प्रतिनिधि सेठिकार ग्राउंड रू जहां रिपोर्ट दौले जे भोटिंग परसेंटेज मध्याह्न सुधा बर्तमान से देखा मिलूनी आम अतीत देखीचे जो भोटिंग अधिक रही एवरेज हार ठारू अधिक रही बीजेपी भल प्रदर्शन करछि किंतु वर्तमान आम देखा पाउचे जे भोटिंग हार सेतिकी नाही तेणु ये गोटे माने बीजेपी आप एटा गोटे किसी अलग प्रकार संदेश दब कि नहीं देखो भोटिंग हार जो साधारण आम कहूँ जो भोटिंग हार अधिक है आंटी इनकम थाए भोटिंग हार अधिक हुए किंतु भोटिंग हार कमुची माने उभय पटे अच्छी बीजेपी बहुत रिबेल कैंडिडेट बीजेपी बहुत नेता संतुष्ट ना आप जानते से लोक विषय माने आग्रह प्रकाश करुवे एटा बीजेपी गोटे से आग्रह प्रकाश करुवे दाबी हो पारे कारण बीजेपी बहुत नेता इधर असंतुष्ट अच्छा रिबेल भी आप देखिए ये जो प्रथम पर्यायर भोटिंग पर जदि बीजेपी तार रणनीति जमती बदल पारे हुए तो जदि जदि रहिला सेमती किछि आप और कांग्रेस भी निजर बदलैबे रणनीति सेमाने मध्ये अधिक एग्रेसिव हेबे सेमाने मध्ये अधिक किछि नुवा लोकों को प्रभावित करबा पई किछि भी सामना को आनी पारते सेमाने कथा एक्जेक्टली आजिर भोट पर सब दल शेष पर्याय पाई 5 तारीख पाई ये जो 2 दिन समय रहिबो से किसी न किसी रणकौशल बदलवा ना कहीं हिसाब मु आश्चर्य हेबिनी किसी लोक किसी नेता जो समसाथी संपर्क अच्छी बड़ नेता सी विभिन्न भितर निगोसिएट कर दियंतु कैंडिडेट स्तर में निगोसिएट कर दियंतु किए कौट जितुची थर्ड पार्टी कौट काटो ये सब कम हुए हो चारिड़े मत कर अनेक लोग तो हिसाब किताब हम से अनुसार अनेक 5-2% भोट एक स्वर हो जाए निश्चय करा जाए सब निर्वाचन करे हम कहीं ट्रांगुलर कथा आसी तो प्रथम पर्याय देखला जानी ने
आज्ञा तो कौन हेबो श्रीजुक्त दास आगामी पर्याय अबा कहि परिबे प्रथम पर्याय वोट मतदान परे तो सब दल रणनीति चेंज करि पारंती अबा कौन रहउची ता परा जणा पड़िबो। धन्यवाद आपनकर तमाम प्रतिक्रिया पाई वरिष्ठ सांबादिक रविदास थिले हम सहित धन्यवाद विक्रम आपनको मध्ये तमाम आलोचना करिथिबारो हम सहित न्यूज रूम रो विक्रम केसरी परिजा मध्ये जोड़ी होइतले। अन्य खबर ऊपर नजर पकेबा गोटे छोटिया ब्रेक समय उपनिर्वाचन कंपुछि पद्मपुर मैदान एथर लड़ाई अभिज्ञ बनाम युव नेतृत्व प्रसंग पलटि चाषी बुणाकार समस्या जिला मान्यता को नहीं भी लगी छक्का पंजा एथर नो रिस्क शासक दल पई सम्मान प्रश्न बड़ रणनीति सह बाजीबात पाई बीजेपी तैयार शेष लड़ाई रे शक्ति देखाइबो हाथ भोट देव पद्मपुर ग्राउंड जीरो रु दमदार कवरेज न्यूज 18 ओडिया रे न्यूज फ्लैश प्रेजेंटेड बाय सफेद डिटर्जेंट पाउडर मोर चॉइस मोर सफेद शिक्षकों आंदोलन स्थगित आंदोलन ओहरिला प्राथमिक शिक्षक संघ हेले एथिपाई राज्य सरकार को डिसेम्बर 20 तारिख पर्यंत महलत देछि संघ। 3 दफा दाबी पूर्ण नहले पुणी डिसेम्बर 21 तारिख जोरदार आंदोलन कराजिबो बोली कहिछि शिक्षक संघ। 3 दफा दाबी नहीं गत रविवार विधानसभा आगरे हजार हजार शिक्षक आंदोलन चलाइथिले। आंदोलनकारी शिक्षकों सह राज्य सरकार 3-3टी बैठक फेल मारिथिला। दाबी पूरण पाई महलत मागिथिले सरकार आउ शिक्षक संघ सरकार को महलत देवा सह आंदोलन को स्थगित रखिछि। जिद्रे अटल आईनजीवी मानिलेनी सर्वोच्च अदालत निर्देश। हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी रे संबलपुर रे जोरदार आंदोलन करछन्ती वकील। आंदोलन बेले पुलिस एवं वकीलों मध्य होइछि प्रबल धस्ताधस्ती। व्यापक फोर्स एवं अधिकारी उपस्थित सत्वे रास्तारू आंदोलनकारी को हटाई पारलेनी पुलिस। कोर्ट को जाई पारलेनी विचारपति। वकीलों को आंदोलन ब्रेक पर स्वागत। मेक इन ओडिशा कनक्लेव आज होउची द्वितीय दिन एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज 2022 वर्षर शिल्पनीति घोषणा करिवे। किछि दिन तळे एहा कैबिनेट रे अनुमोदन मिलिथिला। मेगा व्यवसाय सम्मेलन रे 20 रु अधिक एमओयू स्वाक्षरित हेबार कार्यक्रम रहिछि। 2000 रु अधिक शिल्पपति एथिरे भाग नैछन्ति। एबे इंडस्ट्री लीडर प्लेनारी सेशन चलेछि। आ ए अधिवेशन रे लक्ष्मी मित्तल, करण अदानी, सज्जन जिंदल, नवीन जिंदल, अनिल अग्रवाल को भली प्रमुख शिल्प नेतृवृंद जोग दैछन्ति। अपराह्न शिल्प और निर्माण को आर्थिक प्रोत्साहन शीर्षक आलोचना चक्र अनुष्ठित हेब। 5 नंबर सेमिनार हॉल रे कार्यक्रम हेब। एथिरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अध्यक्ष एसएस मुद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो गुलशन मलिक, एसआईडीबीआई रो अध्यक्ष एस रमन जोग देबे। Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the man who is parsimonious with his words and lets his actions speak louder for itself. Our Honorable Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. It was his idea in the year 2016 which has germinated in such a magnum opus named Make in Odisha, and this is the 3rd edition. Goes back to over 100 years, even before the state of Odisha as it exists today was there. With significant investments by multiple Tata companies, including Tata Steel, Tata Power, TCS, Tata Consumer Products, Indian Hotels, and many others, the Tata Group employs over 50,000 people already in the state of Odisha directly, and another 50,000 people indirectly. The Tata Group of companies, and more specifically Tata Steel, has invested over 75,000 crores in the last 5 years, most of it since the last summit that we had, and we will continue to invest to grow in the state of Odisha for multiple reasons. We've seen that, as many of my colleagues from the industry have mentioned,
This is one of the easiest and most business-friendly states to operate in. It has a political stability, it has a business orientation, it has got very agile decision-making, an empowered group of bureaucrats, and a lot that one dreams for in many other states. Over the last few years, Tata Steel has not just built the Kalinganagar steel plant, which it continues to expand, but has also invested in acquiring the erstwhile Bhushan steel plant, as well as an Nilachal Ispat more recently. Today, we are already producing about 9 million tons of steel in Odisha, which makes us the largest steel producer in Odisha, and we plan to double this over the next few years as we expand in all our locations that we have in Odisha. We as a group and as Tata Steel have also continued to work with the communities in the state of Odisha in multiple areas, whether it's health, whether it's education, and of course whether it's sports, and more specifically in the field of hockey. Again, all this has been possible because of the support that we've received from the Honorable Chief Minister and the government of Odisha over the years. It is no surprise to us that Odisha is one of the fastest industrializing states in India, with an industry growth rate higher than the national industrial growth rate, and an industry share of the state GDP which is higher than the national share of industry in the GDP of the country. Odisha has also been successful in creating an investment climate that is attracting investments in multiple sectors and from multiple companies from India and overseas. Odisha has successfully demonstrated how you can convert the wealth which lies below the ground to jobs, economic development, and prosperity above the ground. Odisha accounts for 1/4 of the steel capacity of the country today, and the share is expected to increase to 1/3 of the steel capacity during this decade. This is a great opportunity for the state of Odisha, because the state of Odisha has a potential during this decade to produce as much steel as what India is producing today. And the state of Odisha is blessed with a coastline in addition to mineral wealth. Today there are countries in the world which import iron ore and export steel, and that's about 150 million tons of steel exports going from countries which import iron ore. Odisha alone has the potential to convert that iron ore into steel and occupy the space that can be vacated by these countries. As the steel industry in general and Tata Steel in particular plan these expansions, a few areas where I think the government needs to focus on. I know we've got a lot of help in these areas, but obviously as we plan our expansion, we want the government also to keep pace with our plans. And I think one area, as was mentioned by Mr. Sajan Jindal earlier, is infrastructure, because any steel plant means movement of 3 to 4 times the material that you're producing, and that means the rail infrastructure, the port infrastructure, the road infrastructure, all that needs to be upgraded much more than it is today to keep up with the pace of steel investments that's happening. Secondly, the provision of adequate power, and more importantly, the infrastructure to support that. Raw material security through sustainable policies supporting sustainable mining, facilitation of installing of slurry pipelines, because that helps in moving the raw materials that's required to the steel plants, and also obviously making sure, as we've always had, the support that is required to move fast on these investments. Once again, a great privilege for us as a group, for us as Tata Steel, to be associated with the state of Odisha, and I wish this investment summit all the very best. I'm sure if the past is any indication to go by, the future looks bright. Thank you very much. Thank you, Mr. Narendran, for your warm address. Ladies and gentlemen, we have amongst us the Gen Next from the Jindal family, Shri Abhuday Jindal, the scion of JSPL, and I request Shri Abhuday Jindal to request Honorable Chief Minister and jointly lay the foundation stone of Jindal Stainless Steel Park. Thank you, Honorable Chief Minister.
As the saying goes, the proof of the pudding lies in eating, and as a culmination of the Herculean efforts put together during the 9 road shows across the country, we have the pudding to eat it too. Ladies and gentlemen, we will have the MOU exchange ceremony for the various proposals received today. May I request the officials to kindly escort the MOU holders to the designated areas, and requesting Shri Hemant Sharma, Principal Secretary Industries, to join the delegation of MOU holders. Requesting the MOU holders to please join in with Principal Secretary Industries for a photo op. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for the MOU exchange ceremony for the various proposals received for Make in Odisha 2022. Representatives of the companies with their various proposals which they have submitted to the Government of Odisha and as part of the MOU exchange. Requesting all those representatives who have already taken the photograph to please go back to the respective seats, and requesting the next batch of MOU holders to kindly join Shri Hemant Sharma on the desk for the next photo op. Thank you, Shri Sharma. A household name, the metal to infrastructure behemoth Adani Group is heavily invested in our state. From Dhamra port to iron beneficiation has already drawn his interest. The Adani Group is also venturing into data centers and other sectors, and I would like to invite Shri Karan Adani to kindly come here and share his thoughts with us. Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, distinguished leaders and administrators, captains of industries and my dear friends. Thank you very much for your invitation to speak at the 3rd edition of the Make in Odisha conclave. I am honored to be here among so many of India's top industrialists. I started to come regularly to Bhubaneswar since our acquisition of Dhamra port in 2014. I was 26 then, and over the years, I have grown to love this great city and state. This is the temple city of India, known for its convergence of our country's Hindu, Buddhist and Jain cultures. This is the city that forms the holy golden triangle, along with the breathtaking beauty of the city of Puri and the city of Konark that hosts the 3 images of the sun god. And this is the city that today continues to transform under the leadership of its beloved leader, Shri Naveen Patnaik ji. Honorable Chief Minister, there could not be a greater reflection of the love, confidence and the faith that the people of your state have in you than the fact that you are in your 5th term as the leader of the state of Odisha. Your empathy and social-based style of leadership are truly inspiring.
the best manifestation of your style of leadership are the social schemes you are implementing, along with the strong discipline you bring to governance. Be it the Kaliya Yojana or the Mission Shakti or the game-changing Biju Swasthya Kalyan Yojana health scheme that covers almost 1 crore families, or the generous dietary stipend to the sports person, or the smart classroom you have built in the most rural parts of the state. These are all game-changing initiatives for the upliftment of the society and gives everyone the confidence to aspire. Equally impressive is your 5T program that focuses on teamwork, technology, transparency, transformation, and time limit, and ensures that the performance of your officials is judged on these 5 factors. Now, allow me to outline Adani Group's plan for Odisha. Our primary interests here are in ports and logistics, industrial clusters and special economic zone, power generation, transmission and distribution, integrated natural resource management, renewable energy, data center, defense, cement and agribusiness. We are leaders in all our core businesses, and Odisha is one of the most important states for the Adani Group. Your guidance has led us to great strides in Dhamra. According to our revised master plan, the Dhamra port will have 35 berths with a massive 315 million tons in port capacity. It is the first port in India to receive environment clearance for more than 300 million tons. We are thankful to the High Level Clearance Authority for approving our proposal to set up a 4 million ton per annum alumina refinery and a 30 million tons per annum iron ore project. Honorable Chief Minister, the alignment between progress, state development and job creation is an essential part of all the investments that we have made. I am delighted to say that our investments in the state of Odisha continues to accelerate. Over the last 5 years, Adani Group has already invested 20,000 crores as we have gone about developing LNG terminal, the Dhamra port and our mining activities. The number of direct jobs created has already touched 10,000 and indirect at 30,000. Our continuing commitment to Odisha is showcased in our planned capital investment that will exceed 60,000 crores over the next 5 years. In closing, let me say that along with our investment, we continue to expand our social activities across Odisha via the Adani Foundation. One new activity we have been very closely monitoring is the formation of Women Producers Group that works to train women from Dhamra's Gram Panchayats and teach them to be self-reliant. I believe this program will be a game changer and help augment Odisha's wide-ranging social programs. Honorable Chief Minister, it is said that in the 18th century, when the British first saw the Rath Yatra in honor of Lord Jagannath, they were so amazed that they introduced a new English word, Juggernaut, meaning unstoppable force. Today, you are the Juggernaut shaping the unstoppable future of this great state. Once again, thank you for your inspiration, guidance and support. I look forward to doing our part to help build Odisha that you continue to shape. Thank you. Jai Hind. Thank you, Shri Karan Adani, for your warm address. Ladies and gentlemen, you had just witnessed the MOU exchange photo op with Shri Hemant Sharma and the MOU holders. So I would just like to take the names of the companies who have signed the MOUs. So please do give a big round of applause after I announce their names. ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, JSW Limited, Renew Power, Avada Ventures Private Limited, Acme Clean Tech Solutions Private Limited, the Vari Energies Limited, My Home, Kalyani Steels Limited, Ocure Energy Holding Limited, Oil India Limited, SR Group, Rumta Metals Private Limited, the SMS India Denali Chorus Refractory Solutions Private Limited, Divya Shakti India Private Limited,
SLN Spinning Mills India Private Limited, the Satlaj Jal Vidyut Nigam Limited, Neyveli Lignite Corporation, NTPC, Indraprastha Gas Limited, and Aditya Birla Renewables Limited. Once again, let's have a big round of applause for the MOU holders. Carrying on, ladies and gentlemen, we have next Renew Power, which was established in 2011 and is one of India's leading renewable energy companies in terms of total energy generation capacity. Since commencing operations with a 25.2 megawatt wind project in Jasdan, Gujarat, the company has grown exponentially and has a current renewable asset of over 13 gigawatt, including projects under development and also in the pipeline. In October 2019, Renew Power became the first RE company in India and 10th globally to cross 5 gigawatts of installed capacity. In 11 years of its operation, Renew Projects has generated many jobs directly and indirectly. They're now venturing out in the field of green hydrogen, green ammonia, and have chosen Odisha to be their destination of choice. Ladies and gentlemen, we have amongst us Srimati Vaishali Nigam Sinha, Chief Sustainability Officer, Renew Power, and may I request her to kindly address us. Honorable Chief Minister, respected Sri Naveen Patnaik ji, Honorable Ministers and Senior Officers of the Odisha Government, leaders of the industry, ladies and gentlemen, Namaskar. On behalf of Renew Power, I'd like to thank the Honorable Chief Minister for inviting us for this momentous day in Odisha's growing status as a favoured investment destination. Renew Power, as was just stated, was set up in 2011 by Sumant. Our first project was a 25 megawatt project in Jasdan in Gujarat. This was inaugurated by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, when he was the Chief Minister of Gujarat. So compared to all the industry captains here, we are fairly young and fairly young even in Odisha. But we are really encouraged by the experience of our colleagues here and are really looking forward to doing business in the state of Odisha. Since the time of our first project, we have grown over 500 times to reach a portfolio of 13,000 megawatts, of which 8,200 megawatts are operational. We have been pioneers in the area of green finance, and we are also the first renewable energy company which got listed on NASDAQ in the United States. Recently, we have diversified into manufacturing of green hydrogen, the clean fuel of the future to replace fossil fuels in all sectors, especially transportation, steel, and fertilizers. Our partner institutions in India are IOC and L&T. At COP27, we also signed a framework agreement with the government of Egypt to set a green hydrogen plant in the Suez Economic Zone. We were one of the only companies to be invited from Asia by the Egyptian government to sign this framework agreement. We look forward to, as has just been announced, the opportunity to work in the area of green hydrogen in the state of Odisha. So thank you so much for the opportunity. At Renew, we go beyond business. For us, we do purpose-driven business, and that's the aim we have in Odisha as well. We are highly encouraged to see the inclusive development which is taking place in Odisha. We look forward to contributing towards that and inclusive growth, engaging women and children. The smart classrooms, which I've been hearing about by all the industry captains, is an area where we are looking at partnering with the government to ensure that they're not only smart, but these are green classrooms as well. So with the blessings of the Chief Minister, we look forward to our entry in the state to help the state move forward in the direction of green and clean energy. Thank you so much. Namaste and Jai Jagannath.
you, Ms. Nigam, for your kind address. Ladies and gentlemen, the Avada Group is India's leading integrated energy group with business interests in renewable power generation, solar module manufacturing, electrolyzer manufacturing, and green ammonia production. The Avada Energy, established in the year 2017, is a flagship company of the Avada Group and is one of the fastest growing renewable energy companies in India. The renewable energy arm has consistently been a top performer in the Indian RE space. It has commissioned a few of India's largest renewable energy projects across 11 states. At the helm of affairs is Shri Vineet Mittal, an alumnus of the Harvard Business School and a serial entrepreneur himself. We are very pleased to have him with us, and may I now request him to kindly share his thoughts with us. Shri Naveen Patnaik ji, Honorable Chief Minister, Government of Odisha, dignitaries on the dais, Shri Hemant Sharma, Secretary of Industries, Government of Odisha, distinguished guests, friends from industry, ladies and gentlemen. It's a privilege and an honor to be among you all for the eventful Invest Odisha Conclave 2022. I grew up in Calcutta and have often been to Jagannath Puri as a kid and have fond memories of the place. It has always amazed me to see how large Jagannath is intimately connected to Odisha's social, culture and religious life. We are a renewable energy business and sunlight is core of our existence. Odisha is home to famous Saint Temple at Kunal, a UNESCO heritage site built in 13th century. It is a testimony to the fact that people have recognized the enormous power of sun well before others. On one hand, Odisha has large forest covers visible when you traveling through the hinterland. On the other hand, as Secretary Sir was explaining, it has large mining and other industry. The perfect blend of industrial development and preservation of nature is hard to achieve. And my congratulations to the state for such a feat in the current era where there is enormous emphasis on sustainable development. Odisha can be guiding light to many. One of the biggest positive of Odisha is its political stability. Policy consistency is an essential prerequisite for industrial growth, and Odisha has the biggest advantage on that front. Shri Naveen Patnaik ji, Honorable Chief Minister, has been at the helm of affairs for past 2 decades, and which speaks of volume of his popularity with the masses and reflection on his pro-people policies. Under ଚାଷ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚାଷୀବାସୀ କେ ଯଦି ଭଲ କରି କଲା ବୋଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖମୁ ପ୍ୟାନ୍ ନି ହେବାର କି কিছু নি ବୋର ଫୋର কিছু ନି ହେବାର ଆମର ବୁଣାକାରରେ ଏନ୍ତା କିଛି ଆମକୁ ଏନ୍ତା ସହଯୋଗ ନେଇ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ସେବା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀର ସେବା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବିକାଶ ଜିନିଷଟେ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥର ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଆଶାଟେ କରୁନୁ ତ ସାର୍ ଏଇ ଆଶା କେତେ ବର୍ଷରୁ ଅଛି ବହୁତ ହେଲାନି ସାର୍ ଏ ଯାଏଁ ପଦମପୁର ଏରିଆରୁ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷା ଜଳସେଚନ ଗମନାଗମନର ଯେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକର ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ନା ହାତେଇ ନେବ ହାତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆମେ ନେବୁ ଜନତାଙ୍କ ମତ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପଦ୍ମପୁର ଅପରାହ୍ନ 3:30 News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ
आंदोलन ओहरिला प्राथमिक शिक्षक संघ हेले एथिपाई राज्य सरकार को डिसेम्बर 20 तारिख पर्यंत महलत देछि संघ। 3 दफा दाबी पूर्ण नहले पुणी डिसेम्बर 21 तारिख जोरदार आंदोलन कराजिबो बोली कहिछि शिक्षक संघ। 3 दफा दाबी नहीं गत रविवार विधानसभा आगरे हजार हजार शिक्षक आंदोलन चलाइथिले। आंदोलनकारी शिक्षकों सह राज्य सरकार तीनोटी बैठक फेल मारिथिला। दाबी पूरण पाई महलत मागिथिले सरकार। आउ शिक्षक संघ सरकार को महलत देवा सह आंदोलन को स्थगित रखिछि। जिद्रे अटल आईनजीवी मानिलेनी सर्वोच्च अदालत निर्देश। हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी संबलपुर में जोरदार आंदोलन करछन्ती वकील। आंदोलन बेले पुलिस एवं वकीलों मध्य होईछि प्रबल धस्ताधस्ती। व्यापक फोर्स एवं अधिकारी उपस्थित सत्वे रास्तारू आंदोलनकारी को हटाई पार्लानी पुलिस। कोर्ट को जाई पार्लानी विचारपति। वकीलों आंदोलन जोगु संबलपुर में समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहितला। जिला वकील संघ कहिछि लाइसेंस बातिल कले भी हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी आंदोलन पछघुंचा देबु नाही। आरंभ होला मेक इन ओडिशा कनक्लेव रो तृतीय संस्करण। मेक इन ओडिशा कनक्लेव को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्घाटन करछन्ती। मुख्यमंत्री कहिसन्ती फिकी सहयोग रे राज्यर अधिक पुंजी निवेश हेबो। पूर्व भारत रे व्यवसाय वाणिज्यर पेंठस्थली पालटिछि ओडिशा। शिल्पायन पई ओडिशा एक प्रकृष्ट स्थान। फिकी ए दिगरे अधिक सहयोग करू बोली आशा करछन्ती नवीन। कनक्लेव रे प्राय 600 स्टॉल बुली देखिछन्ती नवीन। समारोह रे शिल्प मंत्री प्रताप देव जोगदेई 2036 सुधा विकसित ओडिशार लक्ष्य धार्य करा जायछि। कृषि और दक्षता विकास पर एवं शिल्प क्षेत्र को सरकार गुरुत्व देउथुबा शिल्प मंत्री कहिसन्ती। नुआपड़ा जिला खड़ियाल रोड स्थित नियंत्रित बजार कमिटी प्रांगण में चलित खरीफ वर्ष पर धान मंडी आरंभ होईछि। नुआपड़ा जिलापाल पूजा पाठ करी धान मंडीर शुभारंभ करछन्ती। चलित वर्ष नुआपड़ा जिले में 72 गोटी पीसीसी रही। पैक्स जरिया 57टी और एसएचजी को 15टी मंडी दायित्व दि जाइछि। चलित वर्ष 11,607 चाषी पंजीकृत होइछन्ती। नुआपड़ा जिला को प्रथम पर्याय 14,76,320 क्विंटाल धान किणवा पई लक्ष्य धार्य करा जाइछि। हाईकोर्ट हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट मामला आ मासे बढ़िला अवधि। ओडिशा रे आउ लक्षे कोटी पुंजी खटाइबो जेएसडब्ल्यू। मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे बड़ घोषणा कले जेएसडब्ल्यू अध्यक्ष सज्जन जिंदल। सेपटे जिंदल स्टेनलेस स्टील पार्क लिमिटेड उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। द्वितीय दिन में बहु एमओयू स्वाक्षरित। विपुल पुंजी निवेश पई प्रतिश्रुति। गुजरात विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय 89टी आसन पर वोटिंग जारी। 788 प्रार्थी भाग्य फैसला करुछंती। 2 कोटी अधिक मतदाता। दिन 11टा सुधा 19% मतदान। बीजेपी कांग्रेस आप मध्य त्रिमुखी लड़ई। कड़ा सुरक्षा व्यवस्था। पद्मपुर में चली घमासान प्रचार। लगातार तृतीय दिन में बीजेपी पाई धर्मेंद्र माराथन प्रचार। वर्षा राणी घर को घर बुली भोट मागुंट बीजेडी हेवीवेट। कांग्रेस प्रार्थी सत्यभूषण साहू भी चलाई माराथन कैंपेन। ब्लैकमेलर लेडी अर्चना नाग मामला रे ईडी खोलताड़ जारी। हाजर हेले व्यवसायी शिव प्रसाद दास। अर्थनैतिक कारबार नहीं पचराउचरा। अर्चना स्वामी जगबंधु जामिन खारज। सेपटे जामिन पाई जिला दौरा जज को कोर्ट में आवेदन कले अर्चना। यूक्रेन विरोध में पुणी युद्ध को जोरदार करिबा रूसिया। प्रतिरक्षा मंत्री को युद्ध में नेक्स्ट जेनेरेशन वेपन व्यवहार पर पुतिन का निर्देश। अमोघ अस्त्र व्यवहार पर पुतिन का निर्देश बढ़ाइला चिंता। गुजरात विधानसभा 182टी आसन मध्य 89टी प्रथम पर्याय मतदान जारी रही। 25,430 बूथ करा जायछि। दिन 11टा सुधा 19% मतदान रेकर्ड करा जायछि। कच्छ सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात 19टी जिले में 89टी आसन चली भोटिंग। सकाळ 8टारू भोट ग्रहण आरंभ होता बेले यह संध्या 5टा जाए चलिबो।
2,39,76,670 जन भोटर 788 जन प्रार्थी भाग्य निर्धारण करेंगे। पुरुषों संख्या 1,24,33,362 एवं महिला संख्या 1,15,42,811। निर्वाचन को स्वच्छ एवं निरपेक्ष करने 19 जिलार 13,065 बूथ रे लाइव वेबकास्टिंग व्यवस्था करा जायछि। उभय बीजेपी एवं कांग्रेस प्रथम पर्यायर समस्त 89 आसन में प्रार्थी देइछन्ति। अरविंद केजरीवाल आप 88 आसन में निर्वाचन लड़ुछि। बीजेपी कांग्रेस एवं आप व्यतीत बीएसपी सपा सीपीएम एवं बीटीपी भली अन्य 36 राजनीतिक दल मध्य प्रथम पर्याय निर्वाचन में प्रार्थी देइछन्ति। प्रथम पर्यायर 339 जन स्वाधीन प्रार्थी मध्य अछन्ति एवं 2017 विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी 89 आसन 48 रे कांग्रेस एवं 40 आसन रे बाजीमात करितला। गोटे आसन स्वाधीन प्रार्थी जीतले। बैलेट पेपर व्यवस्था मध्य करिसन्ति निर्वाचन कमिशन। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथ पई करा जायछि। वोटरक पई पिंक बूथ रो व्यवस्था करा जायछि। नहीं, अच्छा लग रहा है। आज सबसे पहले दिया हर बार लास्ट होती है। Celebrating the voting day. We are celebrating the voting day for the development of the country. So what message you want to give the society? Yeah, everybody should voting as early as possible for the development of the India. मैं लोगों को अपील करता हूं कि अवश्य मतदान कीजिए। लोकतंत्र में मतदान बहुत बड़ा दान होता है और इस पर्व को आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी मतदान करना आवश्यक है। अवश्य मतदान कीजिए, भारी मतदान कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, आज हमारा जो लोकशाही का एक बड़ा पर्व है, इसीलिए हमें बहुत उत्साह है कि भाई हमारा जो मत का जो अधिकार है वो उपयोग करके एक अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाए। इसीलिए हम जल्दी आए कि हमारा वोट कहीं बिगड़ न जाए। That is very important for everybody because we select our government, so we should plan it properly and select our proper that candidate. It's very important and everybody should give vote on vote. मेक इन ओडिशा कनक्लेव आज होछि द्वितीय दिन। मिली विपुल पुंजी निवेश प्रतिश्रुति। जेएसडब्ल्यू अध्यक्ष सज्जन जिंदल बड़ घोषणा। ओडिशा रे 1 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश करिबो जेएसडब्ल्यू स्टील। या पूर्व 2018 मेक इन ओडिशा रे 60,000 कोटी टंका निवेश लगी जेएसडब्ल्यू प्रतिश्रुतिबद्ध होइतला। सेति मध्यरु 30,000 कोटी निवेश होई सारिछि। बड़ बड़ शिल्प आसिले हजार हजार एमएसएमई गढी उठिबो। एठी एक स्थिर सरकार अछि। शिक्षा स्वास्थ्य पई ढेर अर्थ खर्च करूछंती। हॉकी गौरव हराइथिला किंतु ओडिशा पई ओलंपिक पदक हासिल करि पारिछि बोली कहिसंती जेएसडब्ल्यू अध्यक्ष सज्जन जिंदल। मुख्यमंत्री पुराना मंदिर गुड़िकर नवीकरण करुछंती बोली से कहिसंती एवं द्वितीय दिन रे अनेक एमओयू स्वाक्षरित होईछि। सेहिपरि जेएसपीएल एवं राज्य सरकारक मध्य एक एमओयू स्वाक्षरित होईछि। जिंदल स्टेनलेस स्टील पार्क रो उद्घाटन करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। ओडिशार दिशा निर्धारण रे आमे भूमिका ग्रहण करिबो। राज्य रे निवेश नहीं आमे प्रतिश्रुतिबद्ध। विभिन्न क्षेत्र में आमे 20,000 कोटी निवेश करिछु। शक्ति, अक्षय शक्ति, सीमेंट क्षेत्र में आमर व्यवसाय रहिछि बोली कहिसंती जेएसपीएल अध्यक्ष नवीन जिंदल। धामरा पोर्ट इस्पात रे निवेश करिछि जेएसपीएल। बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना एवं 5T व्यवस्था को मध्य से प्रशंसा करिछु। Ladies and gentlemen, please keep your applause going. Let's encourage them. Thank you. We will now move to the third batch. Aarti Steels Limited, Shri Ma Group, MSP Sponge Iron Limited, Prayan Odisha,
Metatalks, Kashvi Group, VCI Chemical Industries Private Limited, Signet, Emertech Private Limited, SAPL Industries Private Limited, Parry Enterprises India Limited, Hyco Engineers Private Limited, Cotton World and MTC Group. Many congratulations. We now move to the fourth batch. Shanti GD Ispat and Private Power Private Limited, Reliable Sponge, Chala Infatrek Private Limited, Thakur Prasad Sao and Sons, United Ferrocast Private Limited, Kai Group, Environ Care Infra Solutions Private Limited, New Lakshmi Steel and Power Private Limited, Times Steel and Power Private Limited, SJ Environmental Solutions, Golden Horn Containers Hub Private Limited, MVM Group, Shalimar Wire, Durga Dairy. Thank you. So with that, we complete the photo and moving on. Under the leadership of our Honorable Chief Minister, our state of Odisha has become the destination of choice for international investments as well. Ladies and gentlemen, we have three partner countries: Japan, the land of rising sun; Norway, the land of the midnight sun; and Germany, the land which has given the Ruhr Valley to the world. Odisha is also known as the Ruhr of India, with plentiful availability of iron ore, coal, and the partnership can be traced back to the establishment of the Raulkela steel plant with German technology and assistance. Norway has taken the lead in pioneering efforts towards green energy, and we are lucky to have His Excellency with us today. Ladies and gentlemen, I'd like to invite His Excellency Mr. Hans Jacob Frydenlund, Ambassador of Norway to India, and may I request him to kindly address us. Honorable Chief Minister Naveen Patnaik, fellow diplomats, ministers, distinguished guests, dear friends. Norway is delighted to participate in the Make in Odisha Conclave 2022 as a partner country. And thank you, Chief Minister, for the invitation to join the juggernaut. I must commend you for your leadership in organizing this flagship event, bringing businesses, officials, and international partners together. In my delegation today, I have with me major Norwegian companies based in India. And you may ask, why are we here? Because from the outset, we might look very different. Norway is far away, and the climate is really different. Odisha is half the size of Norway, but contains almost 10 times more inhabitants. I will say, in one aspect, we really identified with Odisha. At the turn of the last century, Norway was one of the poorest countries in Europe, if not the poorest. At the turn of this century, Odisha were one of the poorest states of India.
Norway has had an above average growth rate since, like Odisha, climbing up the ladder step by step. And in this respect, we really feel a connect with Odisha. But Odisha, as been pointed out, is resource rich. Norway is resource poor. We have a huge territory compared with population because only 3% of the area is arable. So we have a few resources, we have the oceans, and we have energy. And that is what has been the basis of our economy, and that has been the base of our wealth. And that's where we see that we can actually make a difference. There we see that we can bring something to Odisha. There we see that we have something, area where we can cooperate. Odisha has a coastline. Odisha has opportunities when it comes to maritime and marine industries. We are both energy states, and we're all grappling with actually moving from fossil fuel to renewable. And that is where we do have our focus. And in this respect, we bring with us companies which are on the forefront in the energy sector and in the forefront in moving ahead into the renewable age. If it's linked to hydroelectric power, if it's linked to solar power, and if it's linked to hydrogen. Norway was the first country that started to produce green hydrogen a century ago, and the largest production capacities and facilities ever were built in Norway, and therefore we have something to actually share in this respect on the whole value chain and when it comes to know-how. That's why we're here, by actually combining cooperation in the commercial fields, but also to help solve the great problems of our world today, the climate and environment crisis. And we really are looking forward in the coming days to discuss how we can make this concrete in a way where we both make sure that we move out of fossil fuel and into renewable energy, into circular economy in a way that strengthens the economy, that we have a sustainable industry. And here there's see a lot of untapped potential, and I have to say we're here because Norwegian companies asked us to come here. And that's why we really put emphasis on this conclave. And we're happy to be here, and we're looking forward to discuss more issues like the ones I mentioned, but also offshore wind, carbon capture and storage, and green shipping. So I'm looking forward to the deliberations, very constructive deliberations during the conclave, and also wishing you all a successful event. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your warm words. Ladies and gentlemen, Japan is a key country partner of ours with major investments in the steel manufacturing, food processing, metal ancillary and downstream. May I request His Excellency Hiroshi Suzuki-san, Ambassador of Japan to India, requesting him to kindly address us. ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, देवियों और सज्जनों, नमस्कार।
मेरा नाम हिरोशी सुजुकी है और मैं भारत में जापानी राजदूत नियुक्त हुआ हूँ। आज एक पार्टनर कंट्री के तौर पर मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पटनायक जी और इस आयोजन से संबंधित सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं 9 नवंबर को भारत आया। I have served Prime Minister Shinzo Abe as his private secretary for foreign affairs for 7.5 years. As such, I have seen up close how he endeavored to propel Japan-India relations to a whole new height. Of course, diplomatic, security cooperation, people-to-people exchange cooperation, but one important major pillar, of course, was strengthening economic relations. So when he had a chance to meet Japanese top business leaders, he would always say, if you are considering making new investment overseas, I recommend investing in India. So राजदूत का नया पद ग्रहण करने के बाद अपनी पहली क्षेत्रीय यात्रा के रूप में भुवनेश्वर का दौरा करने की मुझे बहुत खुशी है। ये वर्ष 2022 जापान और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है। ऐसे में हमारे दोनों देशों के बीच के आर्थिक संबंधों को मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण है। मैं ओडिशा के आर्थिक विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अतुलनीय नेतृत्व का हार्दिक सम्मान करता हूँ। इस वर्ष मार्च में हमारे दोनों देशों ने आने वाले 5 वर्षों में जापान से भारत की ओर सरकारी और निजी निवेश तथा फाइनेंसिंग के लिए 5 ट्रिलियन जापानी येन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं ओडिशा को स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाहूँगा। When Prime Minister Abe took office back in late 2000, I traced statistics, and in 2008, only 3 Japanese companies were investing and operating in the state of Odisha. Now, Prime Minister Abe stepped down in his second administration in 2000, and by that time, the number of Japanese companies investing in the state of Odisha has almost become 20-fold. So, if
Prime Minister Abe were standing here today, I'm sure he would say, if you are considering making new investment, I recommend investing in Odisha. Today, as many as 58 Japanese companies, are actively operating in the state of Odisha. To name a few in particular, Nippon Steel, JF Steel, for example, they have been long operating here in Odisha, of course in the area of steel. Now this afternoon, we will have a Japan session where 4 Japanese companies will make presentations. First, Indonesian, and Indonesian is famous for its instant foods such as top ramen noodles. And then TYK Corporation, which will make presentation in the steel sector. And then third, Mitsubishi Corporation. Of course, it's a leading global trading company, which will make presentation on people-to-people exchange. And finally, Fujisoft will make a presentation on IT. So I hope their presentations will bring you most up-to-date on their current activities and hope you will make new connections. Men, make in India or make in Odisha ko barawa dene men puri raganse sahayata karunga. Men aj sabi प्रतिभागियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हिरोशी सुजुकी सान, आपके संबोधन के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। Every year in the month of Margasira on Thursday, every Odia household prays to Goddess Lakshmi for prosperity and wealth, also known as the Margasira Guruvar Puja. Today is the last Thursday dedicated for this auspicious puja. We all know that Odisha is a very rich and diverse state in every aspect. However, it lacked Goddess Lakshmi's blessings for many years. When our Honorable Chief Minister took over the reins of power for the state, he also brought along with him Goddess Lakshmi's blessings of abundance and prosperity. With his foresightedness, pioneering vision, and a deep compassion for his people, he took Odisha on a path of prosperity, abundance, and stability. News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଲତ ଦେଇଛି ସଂଘ 3 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ 3 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗତ ରବିବାରରୁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତିନୋଟି ବୈଠକ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ମହଲତ ମାଗିଥିଲେ ସରକାର ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସରକାରଙ୍କୁ ମହଲତ ଦେବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଆଇନଜୀବୀ ମାନିଲେନି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜୋରଦାର country partners, the ambassadors of Japan and Norway and the Consul General of Germany. Welcome to the land of new opportunities. Welcome to Odisha. Odisha
is fast emerging as a major investment destination in the country. We are a progressive state with clear focus on transformation in all sectors. Stable governance is the cornerstone of peace, prosperity, and progress. We have an unprecedented mandate from the electorate due to our continued performance over the last 2 decades. Our citizen-centric governance model has set global benchmarks. Initiatives like Mo Sarkar and 5T Charter give dignity and respect to our people. Our inclusive development agenda emphasizes on education, health, skill development, agriculture, women's empowerment, tribal development, and so on. Mission Shakti, comprising 70 lakh women, is a unique empowerment initiative. Our health assurance scheme, BSKY, is a milestone in the public health sector. Participatory governance ensures that gains are shared across all sections of society. We have been able to reduce poverty by 50% while doubling the farmers' income over the last 2 decades. Our fiscal prudence and economic management has been appreciated across the country. We are one of the few states with adequate revenues to undertake large-scale infrastructure projects. Our investor-friendly initiatives and transformatory governance has put us on a journey of progress and prosperity. I invite each one of you to come join us on this journey. I assure you that our government will run the extra mile to make you comfortable in our state. We will walk along your side and make sure your dreams as an entrepreneur are realized. Odisha's prosperity is interlinked with new investments. We completely understand this, and therefore we welcome you from the core of our hearts. We offer you better than the best. Our industrial policy provides the support and incentives which are beyond the best in the country. We are launching new policies in the sectors of tourism, renewable energy, apparel and textiles, food processing, exports, and so on. We will continue to work with each one of you and understand your requirements and provide the best support systems. As all of you know, Odisha is a major force in the field of mining,
and mineral-based industries. The state has attracted major investments in steel and aluminium projects and will emerge as the global hub in these sectors by the turn of this decade. However, we are ambitious to develop Odisha in other sectors too. We are making huge capital investment in improving our transport infrastructure, expressway, railways, airports, seaports. We are a pioneer in electricity reforms and have successfully created the framework and investment towards providing quality, affordable energy. Our focus on creating quality education through high schools transformation, world-class higher educational institutions, Skilled in Odisha program, the World's Skills Center, providing quality, affordable healthcare systems will enable social capital and support the industry with highly qualified human resources. Odisha is destined to become a $1 trillion economy in the near future. We will emerge as the gateway to the East and Southeast Asia. I invite you to come and invest in a new Odisha. Come, join the juggernaut. Thank you. मुख्यमंत्री आह्वान करिसेंती ओडिसा रे निवेश पाई एवं समस्त प्रकार सुविधा शिल्पपति को मिलिबो ओडिसा रे प्रोत्साहन मध्ये मिलिबो समस्त प्रकार सेति पई मुख्यमंत्री आह्वान करिसेंती ओडिसा रे निवेश पाई एवं शिल्पपति को एनै प्रतिश्रुति मध्ये दैछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मेक इन ओडिसा कनक्लेव रो तृतीय संस्करण रे आपण माने सुनुथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जोबुली भाबरे संबोधन करिसेंती एवं आह्वान करिसेंती शिल्पपति माननकु ओडिसा रे पुंजी निवेश करिबा पई एवं एथि पई समस्त प्रकार सुविधा मिलिबो ओडिसा रे सर्वाधिक प्रोत्साहन मध्ये मिलिबो एक कथा प्रतिश्रुति दैछंती नवीन पटनायक एवं लगातार आपण माने देखि आसुछती मेक इन ओडिसा कनक्लेव रो आमे आपण को देखि चालिछु जे भली भाबरे विभिन्न प्रकार एमओयू स्वाक्षरित हेउची बड़ बड़ पुंजी निवेशकारी को सहित एवं यारी भितरे मुख्यमंत्री मध्ये आह्वान करिसेंती समस्त निवेशकारी को जे ओडिसा रे आपण माने जदि निवेश करूछंती ताहले आपण को अधिक प्रोत्साहन मिलिबो सर्वाधिक प्रोत्साहन मिलिबो एवं सब प्रकार सुविधा सहयोग राज्य सरकार को तरफ जोगाई दिया जिवो पुंजी निवेश पई ओडिसा सबुठु प्रकृष्ट स्थान एवं प्रकृष्ट स्थान रे आपण को सब प्रकार प्रोत्साहन मिलिबो एक कथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रतिश्रुति मध्ये दैछंती शिल्पपति माननकु एवं शिल्प को प्रोत्साहन पाई आम सरकार पॉलिसी करिछि खाद्य आरंभ करी स्टील जाए सब प्रकार शिल्प को आमे स्वागत करूछु ओडिसा रे आसीछि नुआ शिल्प नीति समस्त शिल्प उद्योगी को आमे सब प्रकार सुविधा जोगाउछु भविष्य रे ओडिसा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हेबो एवं निवेश पाई मुख्यमंत्री एथि पई आह्वान करिछथि समस्त प्रकार शिल्पपति मानकु पुंजी निवेश करिबा पाई शिल्पपति को प्रतिश्रुति मध्ये दैछंती जदि आपण माने ओडिसा रे निवेश करूछंती आपण मानकु समस्त प्रकार प्रोत्साहन सुविधा जोगाई दिया जिवो मेक इन ओडिसा कनक्लेव रे मुख्यमंत्री आह्वान करिछंती पुंजी निवेशकारी को मो सरकारो 5T व्यवस्था हमें लागू करिछु विश्व रे आमको विभिन्न क्षेत्र रे बेंचमार्क मिलिछि
मिशन शक्ति 70 लाख महिला को स्वावलंबी करि पारिछि एकथा कहिसंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। बीएसकेवाई राज्य रे गरीब रोगी को चिकित्सा जोगाउछि। प्रथम थर पर यूक्रेन आक्रमणर वीडियो जारी करिछि रूसिया। रूसिया सीमार जलीगला तैल टैंकर। बुधवार रूसियार बेलारूस और यूक्रेन सीमा को लागिथिबा अंचल रे रूसियार एक तैल टैंकर रे निया लागि पड़ी जाइछि। यूक्रेन सीमा को लागिथिबा रूसियार अंचल गुड़िकरे प्रथमे रूसिया गोळीगोळा माड़ करिथिला। यार दिनक परे आसिछि एभଳି दृश्य। ब्रानेस्क अंचलर राज्यपाल अलेक्जांडर बोगमाज सोशल मीडिया रे एक चिठी लिखिछंती जोथरे उल्लेख रहिछि पेट्रोलियम टैंक रे निया लागिछि। बेलारूस ठारू दक्षिण रे 10 किलोमीटर यूक्रेन रो चेर्निव रु 40 किलोमीटर दूर रे स्थानटी अवस्थित। तेबे पेट्रोलियम टैंकर रे केमिति निया लागिला या पछरे कार हाथ रहिछि किछि जणा पड़ी नाही। रूसिया एक वीडियो जारी करी आक्रमण पछरे यूक्रेन थिबा इशारा करिछि। रूसिया यूक्रेन युद्ध को नहीं आसुची बड़ खबर। खूब शीघ्र युद्ध में रूसिया व्यवहार करिब नेक्स्ट जनरेशन वेपन। प्रतिरक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को एने निर्देश आसिलाणी राष्ट्रपति पुतिन ठारू। रूसिया चलाइथिबा युद्ध में अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र गुड़ी को व्यवहार करने को प्रतिरक्षा मंत्री को निर्देश देइछन्ती पुतिन। पुतिन के निर्देश संपर्क में रूसिया प्रतिरक्षा मंत्री एक बोर्ड बैठक में सूचना देइछन्ती। सबुठु चिंतार विषय होउछि केउ अस्त्र व्यवहार संपर्क में पुतिन ताको निर्देश देइछन्ती ताहा से खुलासा करि नाहांती। अनुमान करा जाउछि रूसिया यार युद्ध परिचालन में स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आनी पारे। 9 मास धरी चली युद्ध यहाँ पर भी रूसिया सैन्य को पछकु घुंचिबा को पड़ुछि। एभଳି अवस्था रूसिया दीर्घ लक्ष्यभेदी अस्त्र शस्त्र ड्रोन मिसाइल निरोधी सिस्टम अधिक व्यवहार करि पारे। रूसिया प्रतिरक्षा मंत्री कहवा कथा ए युद्ध में मिसाइल और आर्टिलरी बड़ भूमिका ग्रहण करिसेंती। आगामी 2023 सुधा रूसिया परमाणु अस्त्र भित्तिभूमि तैयारी करने को प्रस्तुत होउछि। रूसिया और बेलारूस में 100 रु अधिक तालीम शिविर 3 लाख स्वेच्छासेवी उत्तीर्ण हो सारे। ए समस्त को रूसिया युद्ध मैदान को ओह्लाई पारे। सर्गेई कहते बर्तमान युद्ध जमी चली 2023 बेलू रूसियार प्रतिरक्षा बजेट 150 गुण बढ़ी जाइथिबो। ए सबको नजर रखी रूसिया किभଳି यार अमोघ अस्त्र गुड़िक यूक्रेन विरोध में व्यवहार करिबो से नै चिंता करुछि। पूर्व रूसिया परमाणु अस्त्र आक्रमण भय देखाउथिला। यार भितर पुतिन को नेक्स्ट जनरेशन अस्त्र शस्त्र पुणी नुआ चर्चा आरंभ करिछि। प्रकृत में केउ अमोघ अस्त्र कथा कहउछन्ती पुतिन ताहा स्पष्ट न हेबा पुतिन को गुप्त रणनीति आड़ को इशारा करुछि। यूक्रेन को पुणी एक बड़ धरणर सहायता देव अमेरिका। रूसिया आक्रमण में छारखार कीव को अमेरिका देव 53 मिलियन अमेरिकीय डॉलर। एने सूचना देइछन्ती अमेरिका वैदेशिक सचिव एंटोनी ब्लिंकेन। रूसिया आक्रमण में कीव रे ध्वस्त विध्वस्त हो जाइथिबा बिजुली ग्रिड मरामती रे बड़ धरणर अर्थ विनियोग हेबो। ए पैकेज रे रहिछि बिजुली ट्रांसफॉर्मर सर्किट डिस्कनेक्टर गाड़ी तथा अन्य बिजुली संपर्कित सामग्री। तेबे वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी सूचना अनुसार बिडेन प्रशासन 1.1 बिलियन डॉलर खर्च केवल यूक्रेन और मालडोभारे करने को बजेट प्रस्तुत करिछि अमेरिका। सुरक्षाकर्मी को गुली निहत होइछि आईएसआईएस मुख्य अबू हसन अली हासिम अल क्यूरेसी। युद्ध में अबू हसन मृत्यु घटिथिबा आतंकवादी संगठन आईएसआईएस सूचना देछि। जड़े मुखपात्र कहिछि जे भगवान को शत्रु को सह लड़ाई करबा बेले अबू हसन को मृत्यु घटिछि। तेबे केउठी लड़ाई होइतिला केमिति से निहत होला से विषय संगठन कोनोसी तथ्य देई नाही। अबू हसन निहत होइतिबारो संगठन पक्षरु नुआ मुखियार ना घोषणा करा जाइछि। एणिकी कुख्यात आतंकवादी संगठन मुखिया भाबे अबू अल हुसैन अल क्यूरेसी काम करिबो। संगठन पक्षरु अबू अल हुसैन संपर्क में विस्तृत तथ्य दिया जायनि किंतु कुआ जाउछि से जणे भेटरान आतंकवादी संगठन रो समस्त सदस्य ता प्रति अनुगत्य रखिछन्ति। एणिकी ता हिसाब रे संगठन काम करिबो। पुणी थे अफगानिस्तान रे एक बड़ धरणर विस्फोरण घटी। ये विस्फोरण आईबाक सहर विद्यालय घटी जो 16 जनकर मृत्यु होता बेले 24 जन अति कम आहत होती।
बुधवार अपराह्न प्रार्थना समय विस्फोरण घटी जो 16 जनकर मृत्यु होती 24 जन आहत होती समस्त आहत को डाक्तखाना भर्ती अफगानिस्तान तालिबान सरकार देथिबा सूचना अनुसार विस्फोरण में प्राण हराई 16 जनक भितर 10 जन छात्र विस्फोरण कारण वर्तमान सुधा जनापड़नी। दुनियार अनेक देशर सरकार समलिंगी विवाह को आईनगत स्वीकृति देइछन्ति। समलिंगी विवाह को आईनगत स्वीकृति देथिबा देश तालिकार वर्तमान अमेरिकार ना जोड़ी जाइछि। नवेम्बर 30 रे समलिंगी विवाह को अमेरिकार आईनगत स्वीकृति मिलिथिला। ए दिन अमेरिका पई ऐतिहासिक दिन। अमेरिकार संसद द्वारा समलिंगी विवाह बिल पारित हेबा सह सुप्रीम कोर्ट को 2015 निष्पत्ति पर विवाह करिथिबा हजार हजार समलिंगी दंपति को आश्वस्ति मिलिछि। समग्र देश में समलिंगी विवाह को आईनगत मान्यता दि जाइथिला। वर्तमान दुनियार अति कम 32 देश में समलिंगी विवाह को स्वीकृति मिली। गुजरात विधानसभा 182 आसन भितर 89 प्रथम पर्यायर मतदान चली 25,430 बूथ होती। दिन 11टा सुधा 18.95% मतदान रेकर्ड होती। कच्छ सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात 19 जिले में 89 आसन में मतदान चली। सकाल 8टारू भोट ग्रहण आरंभ होता संध्या 5टा जाए चलो 2,39,76,670 जन भोटर 788 प्रार्थी भाग्य निर्धारण करुछंती। पुरुषों संख्या 1,24,33,362 महिला संख्या 1,15,42,811। निर्वाचन को स्वच्छ और निरपेक्ष करने 19 जिलार 13,065 बूथ में लाइव वेबकास्टिंग चली। उभय बीजेपी और कांग्रेस प्रथम पर्यायर समस्त 89 आसन में प्रार्थी देइछन्ति। अरविंद केजरीवाल को आप 88 आसन में लड़ुछि। बीजेपी कांग्रेस और आप व्यतीत बीएसपी सपा सीपीएम बीजेपी भली अन्य 36 राजनैतिक दल भी प्रथम पर्यायर निर्वाचन में प्रार्थी देइछन्ति। प्रथम पर्यायर 339 स्वाधीन प्रार्थी अछन्ति। 2017 विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी 89 आसन 48 और कांग्रेस 40 बाजीमात करिथिला। गोटे आसन स्वाधीन प्रार्थी जीति बैलेट पेपर व्यवस्था भी करिसेंति निर्वाचन कमिशन। संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ पर करा जाइछि स्वतंत्र व्यवस्था। महिला भोटर को पिंक बूथ व्यवस्था करा जाइछि। न्यूज फ्लैश प्रेजेंटेड बाय सफेद डिटर्जेंट पाउडर। मोर चॉइस, मोर सफेद, मोर सफेद। शिक्षकों आंदोलन स्थगित। आंदोलन ओहरिला प्राथमिक शिक्षक संघ। हेले एथिपाई राज्य सरकार को डिसेम्बर 20 तारिख पर्यंत महलत देछि संघ। 3 दफा दाबी पूरण नहले पुणी डिसेम्बर 21 तारिख जोरदार आंदोलन कराजिबो बोली कहिछि शिक्षक संघ। 3 दफा दाबी नहीं गत रविवार विधानसभा आगरे हजार हजार शिक्षक आंदोलन चलाइथिले। आंदोलनकारी शिक्षकों सह राज्य सरकार 3-3टी बैठक फेल मारिथिला। दाबी पूरण पाई महलत मागिथिले सरकार। आउ शिक्षक संघ सरकार को महलत देवा सह आंदोलन को स्थगित रखिछि। जिद्रे अटल आईनजीवी मानिलेनी सर्वोच्च अदालत निर्देश। हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी रे संबलपुर रे जोरदार आंदोलन करछन्ती वकील। आंदोलन बेले पुलिस एवं वकीलों मध्य होइछि प्रबल धस्ताधस्ती। व्यापक फोर्स एवं अधिकारी उपस्थित सत्वे रास्तारू आंदोलनकारी को हटाई पारलेनी पुलिस। कोर्ट को जाई पारलेनी विचारपति। वकीलों आंदोलन जोगु संबलपुर रे समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहितला। जिला वकील संघ कहिछि लाइसेंस बातिल कले भी हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी आंदोलन पछघुंचा देबु नाही। I'd like to welcome His Excellency. मेक इन ओडिशा कनक्लेव आज द्वितीय दिन मिली विपुल पुंजीनिवेश प्रतिश्रुति। जेएसडब्ल्यू अध्यक्ष सज्जन जिंदल बड़ घोषणा। ओडिशा रे आउ 1 लाख कोटी टंकार पुंजीनिवेश करिब जेएसडब्ल्यू स्टील। या पूर्व 2018 मेक इन ओडिशा रे 60,000 कोटी टंका निवेश पई जेएसडब्ल्यू प्रतिश्रुतिबद्ध थिला। सेति भितरु 30,000 कोटी निवेश होई सारिछि।
बड़ बड़ शिल्प आसिले हजार हजार एमएसएमई गढ़ी उठिब एटी एक स्थिर सरकार अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ढेर अर्थ खर्च करुछंती हॉकी गौरव हराइतिला किंतु ओडिशा पई ओलंपिक पदक हासिल करि पारिथिबा जेएसडब्ल्यू अध्यक्ष सर्जन जिंदल कहिसंती एटीर मुख्यमंत्री पुराना मंदिर गुड़िकर नवीकरण करुथिबा से कहिसंती द्वितीय दिन में अनेक एमओयू स्वाक्षरित होईछि जेएसपीएल और राज्य सरकार के भीतर एक एमओयू स्वाक्षरित होईछि जिंदल स्टेनलेस स्टील पार्क उद्घाटन करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ओडिशार दिशा निर्धारण में आमे भूमिका ग्रहण करिबु राज्य में निवेश नहीं आमे प्रतिश्रुतिबद्ध विभिन्न क्षेत्र में आमे 20,000 कोटी निवेश करिछु शक्ति अक्षय शक्ति सीमेंट क्षेत्र में आमर व्यवसाय रहितिबा कहिसंति जेएसपीएल अध्यक्ष नवीन जिंदल धामरा पोर्ट इस्पात निवेश करिछि जेएसपीएल विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना 5टी व्यवस्था को से प्रशंसा करिछथि होलसेल पायलट प्रकल्पर व्यवहार सफल होगा पर एबे खाउटी करिवे व्यवहार आज आरबीआई अनुमोदित ई मुद्रार खाउटी व्यवहार नहीं पायलट प्रकल्पर प्रचलन आरंभ होईछि एबे खाउटी व्यवहार करिवे ई रूपी बा ई मुद्रा पायलट प्रकल्पर खाउटी व्यवहार पाई 8टी बैंक को अनुमति थिबा बेले प्रथम पर्यायर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई येस एवं आईटीएफसी बैंक एथरे अंशग्रहण करिवे परवर्ती पर्यायर बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हेबे प्रथम पर्यायर ई मुद्रा खाउची पायलट प्रकल्पर आरंभ मुंबई दिल्ली बेंगलुरु भुवनेश्वर आरंभ हेउची परवर्ती पर्यायर अहमदाबाद गैंगटक गुवाहाटी हैदराबाद लखनऊ पटना और शिमला रे व्यवहार कराजिबो बैंक गुड़िक माध्यम रे आरबीआई देबो ई मुद्रा जेमाने ई मुद्रा व्यवहार करने को चाहिए से अनुमति पाई बैंक डिजिटल वॉलेट व्यवहार करेंगे मोबाइल रे एथिरे संपृक्त बैंक डिजिटल वॉलेट एप्लिकेशन रखा पड़ो व्यक्ति व्यक्ति भितर और व्यक्ति व्यवसाय मध्य ई मुद्रा प्रचलित हेबो क्यूआर कोड स्कैन करिया को व्यवहार करा जिवो बजार उपलब्ध थिबा कागज टंका किबा धातव मुद्रार मूल्य सह ई मुद्रार मूल्य समान पुणी यहाको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनुमोदन करिथिबारु यार 100% आईनगत वैधता रही अर्थनीति डाउन खसिला आर्थिक अभिवृद्धि जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर में देशर जीडीपी 6.3% होईछि जेतेबेले कि एप्रिल जून क्वार्टर में 13.5% थिला गत वर्ष जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर में जीडीपी 8.4% थिला द्वितीय क्वार्टर में कृषि क्षेत्र में अभिवृद्धि हार 3.2% थिबा बेले एथर रहिछि 4.6% उत्पादन क्षेत्र में अभिवृद्धि हार गत वर्ष एक क्वार्टर में 5.6% थिला से समय ह्रास पाई 4.3% को व्यवसाय होटेल जोगाजोग प्रसारण क्षेत्र में अभिवृद्धि होईछि एसबु क्षेत्र में गत वर्ष द्वितीय क्वार्टर में अभिवृद्धि 9.6% थिबा बेले 2022-23 चलित आर्थिक वर्षर द्वितीय क्वार्टर में 14.3% द्वितीय क्वार्टर में जीडीपी 6.1 रु 6.3% हेबो बोली आरबीआई तार बुलेटिन रे किछ दिन तळे कहिदिला रेटिंग एजेंसी इक्रा 6.5 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.8% आकलन करथिले चलित आर्थिक वर्षर द्वितीय क्वार्टर में चीन रो जीडीपी 3.9% होईछि जातीय स्तर गणमाध्यम एनडीटीवी छाड़िले जनाशुना तथा प्रतिष्ठित सांबादिक रवीश कुमार चैनल प्रतिष्ठाता तथा प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड बोर्ड निर्देशक पदर इस्तीफा देवार गोटे दिन पर वरिष्ठ सांबादिक रवीश कुमार बुधवार यह चैनल इस्तीफा देछथि एने रवीश कुमार एक मेल माध्यम चैनल कर्तृपक्ष को इस्तीफा पत्र पठाइथिबा बेले यहाको ग्रहण करा जायछि एनडीटीवी ग्रुप सभापति सुपर्णा सिंह कहते रवीश भली अल्प किसी सांबादिक निजर खबर प्रसारण जादुरे लोगों को प्रभावित करिबार क्षमता रखती पद्मपुर प्रचार करेंगे नवीन आसंता 2 तारिख में पद्मपुर जाई प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शुक्रवार 11टा बेले पद्मपुर पहुंचे सीएम पद्मपुर 3 समावेश करेंगे मुख्यमंत्री झारबंदी 11:25 करेंगे साधारण सभा दिन 12:30 पाइकमाल जनसभा कार्यक्रम अपराह 3:30 जनसाधारण को उद्बोधन देवे मुख्यमंत्री बीजेडी प्रार्थी वर्षाराणी सिंह बरिहा करेंगे भोट भिक्षा 3 प्रमुख राजनीतिक दल पूरा दम लगाई तेणु बीजेडी प्रार्थी को जिताइबा एथर मुख्यमंत्री पद्मपुर मैदान को ओह्लाइबे पद्मपुर पद्म धरिले पूर्वतन बरगढ़ कांग्रेस सांसद संजय भोई राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती बरगढ़ सांसद सुरेश पुजारी विरोधी दल नेता जयनारायण मिश्र को उपस्थित से बीजेपी रे जोग देछथि
संजय भोई 2009 रु 2014 जाए लोकसभा सदस्य थिले। 4 थर लोकसभा सांसद कृपा सिंधु भोई पुआ होउछंती संजय भोई। पितांक वियोग पर से राजनीति में सक्रिय थिले। 2014 लोकसभा निर्वाचन में पराजित होते। बरगढ़ जिला पाइकमाल संजय भोई घर। बीजेपी नारे संगीन अभियोग आनिले बीजेडी प्रार्थी वर्षाराणी सिंह बरिहा। कहले प्रचार बेले बीजेपी नेता माने तांको व्यक्तिगत भावे आक्षेप करुछंती। तांको विवाह को नहीं सार्वजनिक सभा सोशल मीडिया रे अपप्रचार करा जाउछि। या तांको गभीर भावे मानसिक आघात देछि। जड़े महिला को एभली अपमानित करबा तांको विरोध रे टिप्पणी करबा एक ही प्रकार राजनीति बोली प्रश्न करिसंती वर्षाराणी। मु एही ठिकार झियो एठी पढ़िछि एठी बढ़िछि। मु सब बेले पद्मपुर लोकंक सह अछि आगो को भी रही। मु बीजेडी प्रार्थी हेबा परठू मते व्यक्तिगत भावे आक्षेप करा जाउछि। या ओडिसार परंपरा नुहे। एपरि हीन राजनीति न करबाकू बीजेपी नेता को अनुरोध करिसंती वर्षाराणी। मां मानकू किबळी सम्मान दिया जाए बीजेपी नेता माने मुख्यमंत्री ठारू शिखिबा उचित बोली कहिसंती वर्षाराणी। लेजी ब्लैकमेलर अर्चना ना गिरफ मामला रे जीटी रे हाजर हेले होटल व्यवसायी शिव प्रसाद दास। व्यवसायी शिव प्रसाद को हाजर हेबा पई समन करिथिला आईटी। आर्थिक कारबार नै शिव प्रसाद को पचरा उचरा करा जाउछि। अर्चना और शिव दास के भीतर टंका कारबार होइतिबा सूचना मिलुछि। होटल व्यवसायी शिव प्रसाद दास 2019 रे होटल चलाउथिले। होटल ताज को ओडिसा को से लीज रे नैछंती। 2019 रु अर्चना को संपर्क करे से थिले। अर्चना और श्रद्धांजलि शिव प्रसाद को होटल रे बहुत समय बिताइछंती। एही होटल रे ही अनिचाप डील हेउतिला बोली संदेह करा जाउछि। अर्चना किभली डील करती ता वीडियो स्पष्ट बारी होउछि। अर्चना और श्रद्धांजलि होटल को नियमित जाउथिले। अर्चना को स्वामी जगबंधु को जामीन एडीजे कोर्ट रे खारज होइतिबा बेले आज खोर्धा सेशन कोर्ट रे जामीन आवेदन करिसंती अर्चना। राजरास्ता रे माड़ बसा। राजधानी राजरास्ता रे माड़ बसाइले अंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मी। लोयर पीएमजी आंदोलन स्थल रे बसाइले माड़। गांधी मार्ग आज नाराबाजी नुहे कंपुची लक्ष्मी पुराण रे। धूप दीप झुणा सह हुड़हुड़ी रे कंपुची धारणा स्थल। राज्य परिवहन कमिशनर को कार्यालय सम्मुख में राज्य घरोई बस मालिक संघर धारणा। 8 दफा दाबी नहीं बस मालिक माने धारणा रे बसिछंती। राज्य सरकार को निष्पत्ति को कार्यकारी करिबारे सरकारी स्तर रे स्थाणु तार प्रतिवाद करुछि घरोई बस मालिक संघ। विशेषकर 15 वर्षर ऊर्ध्व समय धरी चलाचल करथिबा बस गुड़ी को राज्य सरकार स्क्रैप नियम रे बंद करबा पई निष्पत्ति को दृढ़ प्रतिवाद करुछि घरोई बस मालिक संघ। संघर 8 दफा दाबी संबलित दाबीपत्र परिवहन कमिशनर जरिया मुख्यमंत्री को प्रदान करिबो। जदि दाबीगुड़ी को सरकार ग्रहण न करती आसंता 7 तारीख पर घरोई मालिक संघ चरम पदक्षेप नेब बोली संपादक सूचना दैछंती। खोर्धा जिला जंकिया थाना बड़पोखरिया निकट में आज भोर मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी। रास्ता कड़े छिड़ा होइतिबा ट्रक को द्रुत गति आसुथिबा कारटी पिटी देबार घटनास्थल में ही कार थिबा 4 जनकर मृत्यु होइछि। मृतकों भितर 2 युवक 2 युवती अछंती। कारटी आंध्ररू आसुथिला। आज भोर एभली घटना घटी। ट्रकटी खराब हो जाइतिबारु NH16 रो बड़पोखरिया निकट में रास्ता कड़े छिड़ा होइतिला। भोर कुहुड़ी थिबा बेले द्रुत गति में कारटी ट्रक पछपटे आसी पिटी हो जाइतिला। स्थानीय लोके घटनास्थल में पहुंची 2 युवक युवती को देखा पाई। तुरंत पुलिस को खबर देवा पर पुलिस आसी 4 जन को बाहर करिथिला। कार भितर सेमानकर घटनास्थल में ही मृत्यु होइतिला। मृतदेह को खोर्धा मेडिकल को पठाई दिया जायछि। सेमानकर परिचय मिल पारिनि। जगतसिंहपुर जिला कटक पारादीप रास्तार तर्जंगा ठारे टाटा मैजिक और कार भितर मुहांमुही धक्का। दुर्घटना रे 2 जन गुरुतर आहत होइछंती। आहतଙ୍କ अवस्था गुरुतर हिबारु प्रथमे जगतसिंहपुर पर कटक स्थानांतर करा जायछि। आहत माने हेले कुजंग अंचलर विभू नंद कटकर शिवानंद मालिक। यहां नहीं घटनास्थल में किसी समय उत्तेजना देखा देथिला। पुलिस पहुंची लोकों को बुझासुझा करने सह स्थिति को नियंत्रण करिछि। न्यूज फ्लैश प्रेजेंटेड बाय सफेद डिटर्जेंट पाउडर। More choice, more सफेद, more सफेद। शिक्षकों आंदोलन स्थगित। आंदोलन ओहरिला प्राथमिक शिक्षक संघ। हेले एथिपाई राज्य सरकार को
डिसेम्बर 20 तारिख पर्यंत महलत देछि संघ। 3 दफा दाबी पूरण नहले पुणी डिसेम्बर 21 तारिख जोरदार आंदोलन कराजिबो बोली कहिछि शिक्षक संघ। 3 दफा दाबी नै गत रविवार विधानसभा आगरे हजार हजार शिक्षक आंदोलन चलाइथिले। आंदोलनकारी शिक्षकଙ୍କ सह राज्य सरकारଙ୍କ 3-3टी बैठक फेल मारिथिला। दाबी पूरण पाई महलत मागिथिले सरकार। आउ शिक्षक संघ सरकार को महलत देवा सह आंदोलन को स्थगित रखिछि। जिद्रे अटल आईनजीवी मानिलेनी सर्वोच्च अदालत निर्देश। हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी रे संबलपुर रे जोरदार आंदोलन करछन्ती वकील। आंदोलन बेले पुलिस एवं वकीलଙ୍କ मध्य होईछि प्रबल धस्ताधस्ती। व्यापक फोर्स एवं अधिकारी उपस्थित सत्वे रास्तारू आंदोलनकारी को हटाई पारलेनी पुलिस। कोर्ट को जाई पारलेनी विचारपति। वकीलଙ୍କ आंदोलन जोगु संबलपुर रे समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहितला। जिला वकील संघ कहिछि लाइसेंस बातिल कले भी हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी आंदोलन पछगुंचा देबु नाही। आरंभ होला मेक इन ओडिशा कनक्लेव रो तृतीय संस्करण। मेक इन ओडिशा कनक्लेव को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उद्घाटन करछन्ती। मुख्यमंत्री कहिसन्ती फिकी सहयोग रे राज्य रो अधिक मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे मुख्यमंत्री आह्वान। शिल्पपति को ओडिशा रे मिलिबो सर्वाधिक प्रोत्साहन। पुंजीनिवेश पई ओडिशा सबुठु प्रकृष्ट स्थान। विश्व रे विभिन्न क्षेत्र रे ओडिशा को मिलिछि बेंचमार्क। ओडिशा रे आउ लक्षे कोटी पुंजी खटाइबो जेएसडब्ल्यू। मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे बड़ घोषणा कले जेएसडब्ल्यू अध्यक्ष सज्जन जिंदल। सेपटे जिंदल स्टेनलेस स्टील पार्क लिमिटेड उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। द्वितीय दिन में बहु एमओयू स्वाक्षरित। विपुल पुंजीनिवेश पर प्रतिश्रुति। राज्य में कोविड रे प्राण हराई 20,000 ऊर्ध्व लोक। विधानसभा तथ्य रखिले राजस्व मंत्री। से भली विगत 10 वर्ष में प्राकृतिक दुर्विपाक राज्यर 227 जनकर प्राणहानि होइथिबा सूचना। प्राकृतिक दुर्विपाकर मुकाबिला पाई मिलिछि प्राय 6,300 कोटी टंकार केंद्रीय सहायता। पद्मपुर में चली घमासान प्रचार। लगातार तृतीय दिन में बीजेपी पाई धर्मेंद्र माराथन प्रचार। वर्षाराणी घर को घर बुली भोट मागुछंती बीजेडी हेवीवेट। कांग्रेस प्रार्थी सत्यभूषण साहू भी चलाइछंती माराथन कैंपेन। ब्लैकमेलर लेडी अर्चना नाग मामलें ईडीर खोलतार जारी। हाजर हेले व्यवसायी शिवप्रसाद दास। अर्थनैतिक कारबार नहीं पचराउचरा। अर्चना स्वामी जगबंधु जमीन खारज। सेपटे जमीन पर जिला दौरा जज को कोर्टे आवेदन कले अर्चना। एवं गुजरात विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्यायर 89टी आसन पर भोटिंग जारी। 788 प्रार्थी भाग्य फैसला करुछंती 2 कोटी अधिक मतदाता। दिन 11टा सुधा 19% मतदान। बीजेपी कांग्रेस आप मध्य त्रिमुखी लड़ई। कड़ा सुरक्षा व्यवस्था। नमस्कार। एवं आसतु खबर अभियान को आगे बढ़ाइबा। ओडिशा रे निवेश पई शिल्पपति को आह्वान देले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। शिल्पपति को ओडिशा रे सर्वाधिक प्रोत्साहन मिलिबो प्रतिश्रुति दैछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ओडिशा रे नुआ शिल्प नीति आसीछि। पुंजीनिवेश पई ओडिशा सबुठु प्रकृष्ट स्थान। देशर राजस्व बड़का राज्य होइछि ओडिशा। राज्य रे निवेश पई अनुकूल परिवेश रहिछि। बीएसकेवाई राज्य रे गरीब रोगी को मागणा चिकित्सा जोगाउछि। मिशन शक्ति माध्यम रे 70 लाख महिला को स्वावलंबी करा जाई पारिछि। विश्व रे हमकु विभिन्न क्षेत्र में मिलिछि बेंचमार्क। आमे मो सरकार एवं 5T व्यवस्था लागू करिछु बोली कहिसंती नवीन। Our investor-friendly initiatives and transformatory governance has put us on a journey of progress and prosperity. I invite each one of you to come join us on this journey. I assure you that our government will run the extra mile to make you comfortable in our state. We will walk along your side
and make sure your dreams as an entrepreneur are realized. Odisha's prosperity is interlinked with new investments. We completely understand this, and therefore we welcome you from the core of our hearts. We offer you better than the best. Our industrial policy provides the support and incentives which are beyond the best in the country. We are launching new policies in the sectors of tourism, renewable energy, apparel and textiles, food processing, exports, and so on. We will continue to work with each one of you and understand your requirements and provide the best support systems. As all of you know, Odisha is a major force in the field of mining and mineral-based industries. The state has attracted major investments in steel and aluminium projects and will emerge as the global hub in these sectors by the turn of this decade. However, we are ambitious to develop Odisha in other sectors too. We are making huge capital investment in improving our transport infrastructure, expressway, railways, airports, seaports. We are a pioneer in electricity reforms and have successfully created the framework and investment towards providing quality, affordable energy. Our focus on creating quality education through high schools transformation, world-class higher educational institutions, Skilled in Odisha program, the World's Skills Center, providing quality, affordable healthcare systems will enable social capital and support the industry with highly qualified human resources. Odisha is destined to become a $1 trillion economy in the near future. We will emerge as the gateway to the East and Southeast Asia. I invite you to come and invest in a new Odisha. Come, join the Juggernaut. मेक इन ओडिशा कनक्लेवर द्वितीय दिन में मिली विपुल पुंजीनिवेश प्रतिश्रुति। जेएसडब्ल्यू अध्यक्ष सज्जन जिंदल बड़ घोषणा। ओडिशा रे आउ 1 लाख कोटी टंकार पुंजीनिवेश करिबो जेएसडब्ल्यू स्टील। या पूर्व 2018 मेक इन ओडिशा रे 60,000 कोटी टंका निवेश लागि जेएसडब्ल्यू प्रतिश्रुतिबद्ध होइतिला। सेथि मध्यरु 30,000 कोटी टंका निवेश होई सारिछि। बड़ बड़ शिल्प आसिले हजार हजार एमएसएमई गढ़ी उठिबो। एठी एक स्थिर सरकार अछि। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ढेर अर्थ खर्च करुछन्ति। हॉकी गौरव हराइथिला किंतु ओडिशा पई ओलंपिक्स पदक हासिल करि पारिछि बोली कहिसंति जेएसडब्ल्यू अध्यक्ष सज्जन जिंदल। या सहित मुख्यमंत्री पुराना मंदिर गुड़िकर नवीकरण करुछन्ति बोली से कहिसंति। द्वितीय दिन में अनेक एमओयू स्वाक्षरित होइछि। सेहि भली जेएसपीएल एवं राज्य सरकारक मध्यरे एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। जिंदल स्टेनलेस स्टील पार्क उद्घाटन करिसंति मुख्यमंत्री। ओडिशार दिशा निर्धारण में आमे भूमिका ग्रहण करिबु। राज्य में निवेश नहीं आमे प्रतिश्रुतिबद्ध। विभिन्न क्षेत्र में आम 20,000 कोटी निवेश करिछु। शक्ति अक्षय शक्ति सीमेंट क्षेत्र में आमर व्यवसाय रही बोली कहिसंति जेएसपीएल अध्यक्ष नवीन जिंदल। धामरापोर्ट इस्पात रे निवेश करिछि जेएसपीएल। बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना 5T व्यवस्था को से प्रशंसा करिसंति। Ladies and gentlemen, our most beloved Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji.
आर्थिक क्षेत्र में ओडिशा हेउछि देशर सबुठु मजबूत राज्य। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बहु स्पीड रे काम करंती बोली कहिसंती आर्सेलर मित्तल अध्यक्ष एलएन मित्तल। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सहित आलोचना करिवार 2 घंटा भितर केन्द्रापड़ा इस्पात प्लांट लगी एमओयू स्वाक्षरित होइथिला। यह हेउछि ओडिशा सरकार। राज्य सरकार केते स्पीड रे काम करंती तार उदाहरण देले आर्सेलर मित्तल कहिथिले। सेदिपई केन्द्रापड़ा एवं पारादीप रे पुंजी निवेश करिछु। बिजू बाबू को मु पूर्वरु जानिछि। मोर इंडोनेशिया प्लांट को बिजू बाबू केन्द्र मंत्री भाव उद्घाटन करथिले। आर्सेलर मित्तल ओडिशा रे केवल इस्पात प्रकल्प करिबोनी बरं नुआ टेक्नोलोजी आनिबो बोली कहले मित्तल। जिला गठन आज राति कैबिनेट बसे मंजूरी दियंतु काली पद्मपुर जिला बनैबार विज्ञप्ति धरिकी आप आसतु झारखंड को पद्मपुर को पाइक माल ओडिशार शिक्षक माने आंदोलन करुछन। ओडिशा रे जो माने भविष्य बनैबे